our school, Jacksonville. In-house training for this training program were chosen a very good topic, anger-free school, and it will be conducted by our resource person, as you know very well, ANURADHA PRASAD. So not taking much time for you, be ready, be comfortable, and I think you will enjoy the session very much, interacting with us, interacting with the RPs, clear your doubts. So that is the main thing about the training. So I hand over to ANURADHA. Please. You have a new round of applause. Thank you, sir. As the guidelines of CBSE and COD Patna, I am ANURADHA PRASAD, welcome you to all in the in-house training program on the topic of anger-free school. At first, I would like to thank Surbi ma'am and Niklesh sir for giving me this opportunity for the training. I am going to start this training with a sloka of Bhagavad Gita. Sloka Gavati Sammoha. Sammohat Smriti Vibharma. Smriti Bhansat Buddhi Naso. Buddhi Nasat Dhamsati. इसका अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति का भ्रम होने से मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, और मनुष्य की बुद्धि का नाश होने से मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है. In the sloka, Sri Krishna has said and given detailed analysis about the functioning of mind. Our mind is suffering from various diseases. Anger, greed, envy are the mental diseases. It leads to bewilderment of the memory, and then person forgets what is wrong and what is right. क्रोध करने पर, एंगर करने पर जब बहुत एंगर होता है तो मनुष्य को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, और कभी-कभी एक्सेसिव एंगर में तो वो ऐसी बातें बोल जाता है कि उसे उस चीज के लिए जिंदगी भर पछताना पड़ता है. So my reason to talk about this topic that CBSE has issued an advisory all throughout the affiliated school that there should be anger-free zone where all teachers, staffs, and students, parents all will try to control their anger. They will present an example before the children and explain them what will be the value of freedom from anger. And if the students will be anger-free, they will be more energized. And the next day, they will come to school with more happiness and with more energy. And it will be helpful to them to stay mentally healthy and emotionally fit. And CBSE has said in its advisory that it should be under the joyful learning and holistic fitness. And it will be helpful to the skill development of the children. The children will work with more creativity in the anger-free zone. CBSE has said that there should be a signboard in front of the gate that this area is an anger-free zone. You can see here a beautiful quote of Mahatma Gandhi. The anger and intolerance are the enemies of correct understanding. जो एंगर है वो हमारे सही समझ की सही सोच का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं तो हमें ये पता ही नहीं रहता कि हम क्या सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा एंगर किस लेवल का है वो हमें समझ ही नहीं आता है. School where students are learning in a joyful
and what they learn in the school, they will teach to their parents. Imagine, after returning from school, when the children went home and told their parents that you are not allowed to be under, that it will be the big reward for the school. The environment of school and home, both atmosphere will be happy and they will be under free. So you can see here CBSE reason for under free school. Reason is that in a bid to bring about positive change in children, the CBSE has asked to all its affiliated schools to become anger free zone, where everyone, including teachers, staff and parents, will try to manage their anger. तो CBSE का सबसे बड़ा रीजन है कि स्कूल में एंगर फ्री जोन बनाना है, क्योंकि बच्चों में पॉजिटिव चेंज लाना है। बच्चों जो स्कूल में आते हैं फियर के साथ, एक्यूमुलेशन के साथ, और वो किसी दिन तो स्कूल आना नहीं चाहते हैं, किसी दिन आते हैं तो उन्हें डर लगा रहता है। तो अगर हमारा स्कूल विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल द स्टाफ, अगर वो एंगर फ्री जोन बनेगा तो बच्चे जो है नेक्स्ट डे बहुत एनर्जी के साथ और हैप्पीनेस के साथ स्कूल आएंगे। एंड रीजन इज दैट दिस इनिशिएटिव विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स in developing effective skill and eradicating emotions like fear, disrespect and humiliation, which are the byproducts of anger. So this change will help children become more mentally active and emotionally wealthy. अगर बच्चे फ्री रहेंगे, एंगर फ्री रहेंगे, और फियर से डिसरेस्पेक्ट की फीलिंग होती है, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग होती है, तो नेक्स्ट डे जो बच्चे आएंगे तो वो पूरे मेंटली एक्टिव रहेंगे और इमोशनली हेल्दी रहेंगे। उनमें स्किल डेवलपमेंट करेगा और वो जो है अपने काम को और भी क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। तो सीरियसली द मेन रीजन बिहाइंड सीरियसली टू एंकर फ्री जोन, द चिल्ड्रन विल लर्न इन अ जॉयफुल अंडर द जॉयफुल लर्निंग एंड होलिस्टिक फिटनेस। And there is a beautiful quote on anger. Anger can't solve anything. It fixes nothing, but it can destroy everything. Now we are talking about anger free. So at first, before knowing the meaning of full form of anger free, we will know what anger is. Anger is an emotion that comes at any moment and leaves an impression. The reason for the anger is completely personal. एंगर एक इमोशन है जो किसी को भी किसी भी क्षण आ सकता है और उसका रीजन बिल्कुल पर्सनल होता है। सबका अपना अपना रीजन होता है गुस्सा होने का। There are so many triggers, so many causes of anger. आप स्ट्रेस में हैं तो गुस्सा हो रहा है, इरिटेशन में आप ओवरलोडेड हैं, आप टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, तो बहुत सारे रीजन है जो आप गुस्सा हो रहा है। ये नेचुरल, इट इज अ नेचुरल इमोशन। गुस्से में आपका एक्सप्रेशन क्या है? आपका फेस जो है वो ब्लैक हो जाए, रेड हो जाए, या फिजिकल वायलेंस करने लगे, अब्यूजिंग करने लगे, तो बहुत सारा होता है। ये नेचुरल इमोशन होता है, ये पर्सनल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है एंगर को गुस्सा होने का। फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर, जब हम गुस्सा होते हैं तो उस समय अगर हमें कुछ भी बोला जाए तो वो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। उस समय हम सैड महसूस करते हैं, ग्लूमी महसूस करते हैं, पूरा मूड हमारा खराब हो जाता है, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। टंग वर्क्स फास्टर देन माइंड। गुस्से में हमारी जुबान हमारी माइंड से ज्यादा तेज चलती है। हमारा माइंड पहले कुछ सोचे उससे पहले हमारी जुबान चलने लगती है, तो इससे हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गुस्से में हम क्या बोल बैठते हैं वो पता ही नहीं लगता और उसके चलते हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है और हो सकता है कि इसमें हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एवरीवन गेट्स एंग्री समटाइम्स, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सब कभी ना कभी गुस्सा होते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि मैं गुस्सा नहीं होता। ये ह्यूमन बीइंग का हिस्सा है, बट ये हमेशा कुछ ऐसा
रीजन क्या जाता है कि वो गुस्सा शो करते हैं, लेकिन there are so many causes of anger, but it depends on you कि how are you become angry. तो anger जो है उसमें कि appropriate level of anger is good. Appropriate level of anger that energize you to handle the situation, take out the solution, and think about properly. आप अगर appropriate level का गुस्सा अपनी राइट्स के लिए कर रहे हैं, जहाँ पर गलत है वहाँ उसके लिए आप बोल रहे हैं, तो उस तरह का एंगर सही है। वो आपको एनर्जाइज करता है कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए, तो वो एंगर, this type of anger is good. But excessive anger is not good. So excessive anger is not called anger. It is called aggression. In excessive anger, your blood pressure becomes high. There are thousands of heart attacks. You feel depressed, and you don't think properly. You don't think straight. तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसमें बहुत सारे आपको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। आप में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो गुस्सा ठीक है, लेकिन एक्सेसिव एंगर इज नॉट गुड। एंड फर्स्ट सी द वीडियो हाउ एंगर कैन बी एनिमी।
and try to not in it. It would someday allow you to do for tonight. The first one was to start the reading Scout Street. Coming within just a moment, just look out with a stick in his hand. He started moving the cows fortunately. The cow suffered with pain and furiously discovered the next sound. The cow had covered down. So they shouted to the floor. He hit the door and started on his left leg. He could not work now. Then he shouted within the donkey. He struck him on his right leg. Now, both his legs were injured. He rolled his way to the lodge. The doctor bandaged, rolled his leg, and dropped him home. I explained everything to his father. Mother made him realize that he was a moving picture. My father was interacting with mother instead. Don't cry, mother. I did not touch you. Mother, I was alone. That anger is very greatest for me. I will never let angry now. Colin learned caution and realized that he should not use her words frequently. There was a change word, ever after knows no well. If a person is angry with you, don't react. Just respond to the smile. If you are losing your temper, don't stay or drink the blossom water. It will calm you down. Anger is man's greatest enemy. It prevents a person from taking wise decisions for pleasure. Fatal, causing death. Employed, that's a right job. Chasing, go wrong to somebody or something. Wait, to work up difficulty when legs not hurt. Interrupted, to do something that makes somebody stop what he or she is saying properly. Those careful, get angry. Can anyone tell you what they noticed in the video? You know what? You go outside the register. Register sign करके आइए take it. Morning everyone. Good morning everyone. This is Lilima. Today in this video, we have seen the video of नहीं मैडम, please don't do this type of thing. आपको नीचे से साइन कर बोला गया था, आप नहीं करते. ये कौन बोलने के लिए कहा है? नहीं प्लीज इस तरह का काम मत करिए. If you are so much नहीं करता है. अभी टी टाइम में आप जाइएगा नीचे, ठीक है? हमसे मिलिएगा ना. प्लीज सिर्फ जाने की जरूरत नहीं है. अभी सी ब्रेक होगा तब नीचे जाइएगा. अब जाके ऑफिस में मिलिएगा. So in the last video that we saw, right? In the conclusion of that video, we have seen that it says neither is the man's greatest enemy. So in that video, we have seen that the boy was always in the world of taking revenge for everything. So in conclusion, I think in the age of taking revenge, we just harm ourselves. In the world of taking revenge, we just harm ourselves. And anger does not give us something profitable. It causes just harm to even us and others sitting around ourselves and surrounding also. And yes, the conclusion was that anger was man's greatest enemy. So yeah, it's true in the video that anger is man's greatest enemy and only causes harm to
ourselves and others also. Very good. किसी को बोले नहीं यहाँ पे बैठे ओके सर आइए ना इधर ये आगे बैठ माइक लेने का है और एक माइक क्या नहीं You can see here a very beautiful quote of Aristotle. Anybody can become ant. चलो Anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person and to right degree and at the right time and at the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. कोई भी गुस्सा हो सकता है, गुस्सा होना बहुत आसान है, लेकिन राइट पर्सन के साथ, जैसे हम किसी से गुस्सा है, किसी के बात से गुस्सा, वो गुस्सा हम किसी और पर निकालते हैं, तो वो सही नहीं है। इन राइट डिग्री, सही लेवल में गुस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि हम गुस्से में जो है फिजिकल बैलेंस कर रहे हैं या अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। राइट टाइम, गुस्सा में सही समय पर। आज हम किसी से गुस्सा है, 2 दिन के बाद बुलाकर उसको हम अपना गुस्सा निकालते हैं, तो ये भी सही नहीं है। एंड एट द राइट पर्पस, हमारे गुस्से का लेवल क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं, किस लिए गुस्सा हो रहे हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। एंड द राइट वे, और गुस्सा भी सही तरीके से, ही कि गुस्सा में हम भी किसी के हाथ बाल भी नोच रहे हैं और इस तरह से धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो ये एरिस्टोटल ने कहा है कि गुस्सा होना आसान है, लेकिन इस तरह से गुस्सा होना वो सबकी बस की बात नहीं है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से जो है uncontrolled anger leads to negative consequences, especially in a workplace. किस तरह से वो वहां पर उसको कितने सारे परिणामों का सामना करना पड़ा। Now we will know the full meaning of anger free. What is the meaning of anger free? So you can see here the full form of. At first we will talk about anger. Anger A, attitude of gratitude. Can anyone care about what is attitude of gratitude? Deepak sir. Anger, good morning everyone. I'm Deepak. A for attitude to gratitude. That means attitude means एक तरह से मनोवृत्ति and gratitude that means किसी के प्रति अच्छा भावना रखना। Right. Anyone? Pratika. A stands for your attitude to gratitude. It means the sense of being thankful to others or what others give to us, so being thankful to them. ये नहीं आ रहा है Hello. 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 Pratima is described very well. So, attitude of gratitude. When we have an attitude of gratitude, then we become healthier and happier all around us. Gratitude is related with the many qualities, such as
It कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हो रहा है। it increases our productivity, it decreases our stress, increase increase our decrease our pressure, help in better quality of sleep, stronger our relationship. So there are so many qualities of gratitude. तो यहाँ पर मान लीजिए कि 10 लोग बैठे हैं और सभी एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर एक आदमी है जो सबको समझा रहा है, तो उस आदमी का जो एटीट्यूड है वही उसका ग्रेटिट्यूड है। तो हियर आई वांट टू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड बॉय। एक लड़का था जो बिल्डिंग की सीढ़ी पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक हैट था और एक साइन बोर्ड था, और साइन बोर्ड पे लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी। तो वहां से जो गुजरने वाले थे, एक दो आते थे, उसके हैट में वो साइन डालकर चले जाते थे। कोई बहुत कोई सभी देख रहे थे लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और वो उस लड़के को देखता है, हैट को देखता है, साइन बोर्ड को देखता है। वो आता है, अपने पॉकेट से कुछ कॉइंस निकालता है और उसके हैट में डाल देता है और साइन बोर्ड लेता है, उसके पीछे में कुछ लिख देता है। थोड़ी ही देर में उसका हैट जो है वो कॉइन से भर जाता है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी फिर आता है कि वहां देख क्या स्थिति है, वो जाकर देखे। जब वो जैसे ही वो आता है, वो लड़का उसके फुट स्टेप्स से पहचान लेता है। फिर वो उसे बुलाता है, पूछता है कि आपने ऐसा क्या लिखा था जो मेरा हैट जो है कॉइन से भर गया। तो वो बोला कि जो तुम लिखे थे मैं भी वही लिखा, मीनिंग सेम है, बस तुमने लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प मी, और मैंने लिखा कि टुडे इज द ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी। तो ये जो व्यक्ति का एटीट्यूड था वही उसका ग्रेटिट्यूड है। नाउ सेकंड एंड नो टू बैड मूड। कैन एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? मीनल मैम। Good morning, everyone. No to bad mood means we should, if we are in bad mood, then we say according to the situation. We can change our mood. No to bad mood. Mood is related with the feelings. It is a state of feeling that is related with emotion. So we always think positively. In an adverse situation, we never spoil our mood. We should never spoil our mood. We always think positive and try to solve the problem. And the next G, go ahead of solution. Go ahead of solution whenever such types of situation come. If you are in anger mood or the atmosphere of anger, then we have to find the solution. आपको उसका solution खोजना है, ना कि उस झगड़े में पड़ना है। आपको situation को handle करना है। And the next E, empathy always. जा सकते हैं तो explain it. In anger-free school, the E is very important for all of us. That because we are working in our school and especially in front of the students where we can explain anything, that empathy is very useful words. That if the students have any type of problems there, and you can become angry on the student that they were frustrated, so you must be empathic at that time. उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना है, उसकी बातों को समझने का कोशिश करना है कि उसके साथ में ये प्रॉब्लम क्यों आया है। आप यदि वहां पे अपना सिंपैथी दिखाने का कोशिश करते हैं तो शायद वो उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। एंड वी मेक आवर स्कूल और क्लास और एनी अदर प्लेसेस बिकम एंगर फ्री। Thank you, sir. Very well said. Empathy always.
तो we should have modesty and politeness in our behavior. Politeness is a such thing that anyone will be ready to help you in any time. तो अगर हमारे, जैसा कि सर ने कहा कि अगर हमारे बिहेवियर में पोलाइटनेस होगा, सिंपैथी होगा, तो हम दूसरे के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम दूसरों के भी और अपने वर्क प्लेस में जो भी हमारे साथ, चाहे वो कलीग्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी प्रॉब्लम को हम कहीं हद तक समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आई वांट टू शेयर अ स्टोरी अगेन, और स्टोरी ऑफ अ कैट। एक जंगल था जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ और ट्री था जिसमें एक होल था, और उस होल में एक बिल्ली जो है वो फंस गई थी, और वो बहुत निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और वो बिल्ली को देखता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। जब वो पहली बार उसे निकालता है तो बिल्ली उसे पंजा मार देती है। फिर वो दूसरी बार कोशिश करता है, दूसरी बार भी बिल्ली पंजा मार देती है। तीसरी बार कोशिश करता है, तीसरी बार भी बिल्ली पंजा मार देती है। एक आदमी दूर खड़ा और ये सब देखता रहता है। फिर वो उसे दूर से ही बोलता है कि उसे अपने हाथ पर छोड़ दो, क्योंकि वो तो आपको मत कर रही है, आपको चोट पहुंचा रही है। लेकिन वो आदमी जो है उसको बचाना नहीं छोड़ता। फिर चौथी बार भी वो कोशिश करता है, पांचवी बार भी, और हर बार बिल्ली पंजा मार देती है। फिर किसी तरह से वो बिल्ली को वहां से निकालता है और बिल्ली फिर दौड़कर चली जाती है। तो वो आदमी पूछता है उससे कि आप, वो बिल्ली बार बार आपको चोट पहुंचा रही थी, पंजा मार रही थी, फिर भी आपने उसकी हेल्प करनी क्यों मदद नहीं की? तो ये उसकी क्वालिटी थी, उसकी वो जो सिंपैथी, पोलाइटनेस, मॉडेस्टी, जिसके कारण बिल्ली जो है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। लेकिन वो आदमी ने उस जगह जो है वो कंट्रोल दिखाया, अब सिंपैथी दिखाई और उस बिल्ली को वहां से निकाला, उस प्रॉब्लम से उसको निकाला। तो दैट इज एम्पैथी। R is resilience. Can anyone explain? Syamal sir. Okay. Anyone? Devashish sir. Resilience. Resilience means we have a flexibility in our behavior, in our thought. If there will be flexibility, then we can handle any situation. And there should be a positive thought in ourselves. तो हमें अपने विचार में, अपने माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें रिजिड नहीं होना है कि अगर ये चीज करना है तो ये चीज करना है। हमें सिचुएशन को देखना है कि वो सिचुएशन कैसा है, उस सिचुएशन में हम अपने आप को किस तरह से ढाल सकते हैं। तो तभी हम वहाँ उस प्रॉब्लम से, उस एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। So here I am going to share one more story, which is a tiles and एक टाइल्स की और एक मूर्ति की कहानी है। तो एक जहाँ पर संगमरमर को तराशा जाता था, तो वहाँ पर संगमरमर को तराश कर कुछ तो टाइल्स बनाए गए और कुछ मूर्ति बनाई गई। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि टाइल्स और मूर्ति को बहुत दूर कहीं भेजा जाए। तो वो कहीं दूर एक कंटेनर में भरकर भेजा जा रहा था। तभी टाइल्स और मूर्ति ने सोचा कि इतने दूर का सफर है, ऐसे चुपचाप तो जाया नहीं जा सकता, चलो आपस में बात कर लेते हैं। तो टाइल्स ने कहा कि देखो ये सब कर्मों का फल है, मैं भी संगमरमर से बनी, तुम भी संगमरमर से बनी हो, लेकिन मैं सबके पैरों के नीचे रहूंगी और तुम्हारे सब पैर छुएंगे। कोई तो तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे, कोई तुम्हारी पूजा भी करेंगे। तो मूर्ति ने कहा कि तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन ये कि जब शिल्पकार हम लोगों को किसी नुकीली चीज से तराश रहा था, तो तुम उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके कारण तुम संगमरमर बन गई और मैं मूर्ति बन गई। इसीलिए हमें कहीं भी रिजिड नहीं होना है, उस सिचुएशन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है, तभी हम उस स्थिति से उबर सकते हैं और कहीं भी हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। So here you can see the meaning of anger. जहाँ हम anger मतलब गुस्सा समझ रहे थे, यहाँ पर anger की पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रगति इस क्लास में हिंदी पढ़ा रही है, वहाँ पर 3 शब्दों का एक वाक्य है, रुको मत भागो, और इसको हमें पढ़ाना
विराम चिन्ह के साथ पढ़ाते हैं। तो वहां पर पहला सेंटेंस जब हम बोले कि रुको कॉमा मत भागो, तो इसका अर्थ हो गया कि रुको मत भागो, और उसी को अगर हम विराम चिन्ह का हेरफेर कर दिए कि रुको मत कॉमा भागो, जिसका अर्थ हुआ कि मत रुको, भागते रहो, चलते रहो। तो आपने देखा कि कोमा के हेरफेर से ही सारा मीनिंग चेंज हो गया। तो इसी तरह जहाँ एंगर को हम दूसरे रूप में ले रहे थे, जब हमने इसका फुल फॉर्म निकाला तो एंगर का मीनिंग भी चेंज हो गया। So now we will do a worksheet. After that we will know what is the full form of flee. Okay. Yes, sir. Worksheet. In this worksheet, there will be totally your personal view. Excuse me, you don't have to read coloring, only tick it. You have to circle also. Circle also. Please maintain silence.
Please maintain silence, and there should be totally your own view. Mention your name and OSID in the receipt. I think all of you will have completed your message. Yes, ma'am. ये आपका पूरा अपना पर्सनल व्यू है, फिर भी I will discuss this time. First, use my words to hurt other people's feelings. Take a time out from the situation. Use my body to hurt others. Yell and scream. My point of view, like use my body to hurt others sometimes it is. Sometimes it will hurt. बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, हो सकता है सबको करता है, ये अपना अपना मीनिंग है। And I want to ask personally, when you become angry, either to hurt someone or break something, it is your what you do. Either to hurt someone or break something. Sometimes. And the other time, what you do? Same question. Take deep breaths. Will you share your feeling? I am feeling in a positive way. Share how I am feeling in a positive way. आप share करते हैं अपनी feeling को. Positive way और negative way. Give me look. Sometimes.
Think about the consequences. Try to hurt myself. Talk with a friend about how I am feeling. I am always thinking about the consequences. When I am getting angry on someone, then I am always thinking that there is something bad consequences coming to all. Maybe शायद नहीं लेकिन मेरे को सोचना पड़ता है होगा। और ये सभी को सोचना भी चाहिए कि इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, क्या रिजल्ट होने वाला है। Count to 10. Never. But you should do it. Middle ma'am, do sometimes. Sometimes. I also do something, but not something very area and methods, right? Doing something extra work like Keep my feelings bottled up. अपने feelings को दबा के रख देते हैं। That talk. Never. ये तो गलत हो जाएगा that side से करता है गलत के साथ गलत हो जाएगा If you want to share your view, you can share. Talk with others about how I am feeling. Always. and ईमानदारी वाला आंसर लेकिन आ नहीं रहा है You always talk backward. Backward शायद हम लोग सभी करते हैं थोड़ा करते हैं ज़्यादा करते हैं कहीं सब होता है लेकिन सब बताइए यही यहाँ फीलिंग्स है Always ऐसा मैं हूँ या बाकी कोई हो अब यदि कुछ बोलते हैं तो आप भी शायद हमारे पीछे जाने के बाद विचार को बहुत जाते हैं अपनी कई बातें से हमारे पीछे सब नहीं करते Not always, but sometimes. ये थोड़ी देर सकते कि हम नहीं करते हैं लगता है कि कभी ना कभी करते ही नहीं Find something what will distract me from feeling angry. Throw objects or destroy property. Cry. Use bad words or burn. Thank you. Complete mental silence. Now we will know the full form of free. F for free from negative thoughts. Amit sir. Okay. Free from negative thoughts. It is very much demanded for we people, the teachers, because we are regularly interacting with our colleagues, our peer groups, and also the students. So we must not be very negative in our thoughts. अगर हम negative thoughts में जाएंगे तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा. So that will not do anyone. So we must be of some positive thoughts, positive mind when we are entering the school or when we are entering the class. Thank you. Thank you, sir. So we have to free from negative thoughts. We don't have to promote negative thoughts. Always think positive. If we will think positive, then we will reduce our anger. और स्पेशली स्कूल में जब हम स्कूल में जाते हैं बच्चों के पास जाते हैं तो ऐसा होता है आप ये बोल ही नहीं सकते कि हमें गुस्सा नहीं आता उस समय लेकिन उस समय हमें अपने आप को उस समय पॉजिटिव थिंकिंग लाना है पॉजिटिव थॉट लाना है और नेगेटिव थॉट को हमें वहाँ कन्वर्ट नहीं करना है तो इससे हम क्या होगा एंगर से बचकर रहेंगे और नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी नेक्स्ट आर reinforcing positivity. Can anyone will explain? Ravi sir.
रीइंफोर्सिंग पॉजिटिविटी। हमें अपने पॉजिटिविटी को सुदृढ़ रखना चाहिए, उसे डिटरमाइन हमें होना चाहिए कि हम नेगेटिव की ओर न जाएं, हमेशा पॉजिटिवली सोचें। थैंक यू। थैंक यू सर। सर For someone to see towards go to the positivity in life and do well in life. थैंक यू सर। We have to bring positivity in our behavior, in our thinking. We don't have to think that something went wrong with me. Just as a coin has two sides, positive and negative. So we have to take positive side, positive thinking, and it will be very good if we will take think positive that we will come out from the any adverse situation and easily we can find out the solution and handle any type of situation. Next, E. Eradicating criticism. Criticism. We should remove क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें उसको कम करना चाहिए थोड़ा। काम करने का मतलब कुछ करना चाहिए, नहीं करने का मतलब नहीं करना। नहीं पॉजिटिव की है, आलोचना नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? I want some and Abhishek sir. Explain something. Very good. हम बोल रहे हैं कि आलोचना करना भी जरूरी है। गलत में गंदा का बुरा काम कर रहा है, गलत में पेरेंट्स काम नहीं कर रहा, उसके बारे में बोला जाए तो शायद वो अपना काम नहीं सुधारेगा, इसलिए उसको बताना भी जरूरी है। हाँ जरूरी है। आज मोदी जी का तो आलोचना होता है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में लेते हैं। ईगो रहेगा तभी उसको नेगेटिव में लेंगे। Thank you. We should avoid criticism. Criticize अगर हम किसी का करते हैं, मान लीजिए कि आपने देखा कि उसने बुरा किया, तो अगर हम उसका क्रिटिसाइज करेंगे, पीठ पीछे उसकी आलोचना करेंगे या उसके बारे में हम र्यूमर्स गलत फैला देंगे, तो वो चीज गलत है। वहां पर आप उस सिचुएशन को समझिए, जब उस एंगल के मूड में है, वहां पर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करके आप उसको उस चीज से दूर हटाइए, उसको दूर करिए और उसको इंकरेज करिए, उसको कुछ टेक्निक्स बताइए कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले, तभी वो खुद भी एंगल फ्री हो सकते हैं और दूसरों को भी आप एंगल फ्री बना सकते हैं। नेक्स्ट ई empowering oneself. How can we empower ourselves? प्रगति में Oneself या myself. You can myself, ourselves also. पॉजिटिव थॉट्स लेके हम रिकवर कर सकते हैं उसको, इस निगेटिव किसी में उसको पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट करके हम उसको इम्पावरिंग कर सकते हैं और उसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो empowering oneself, we have to see that if the situation has come, then we have to solve it. We have to make strong, and we should make our willpower strong to come out from the situation.
अगर उस स्थिति में आप खुद ही उस झमेले में पड़ जाइएगा तो फिर आप उस चीज को दूर नहीं कर सकते। यहाँ पर अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, आपके विल पावर को मजबूत बनाना है, ताकि हम झमेले में ना पड़े, बल्कि उसका सोल्यूशन भी करें और उस झमेले से बाहर भी आए, तभी हम फ्री हो सकते हैं। तो हियर यू सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री। तो यहाँ आपने देखा कि जहाँ हम लोग एंगल का मतलब बिल्कुल अलग समझ रहे थे, जब एंगल फ्री का हमने फुल फॉर्म किया तो यहाँ पर मीनिंग जो है टोटली चेंज हो गया। तो कैसे हम एंगल फ्री हो सकते हैं, किस तरह से हम अपने एंगल को दूर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी बात में बार बार अगर गुस्सा होंगे और गुस्सा करके सोचेंगे कि हम अपना काम निकलवा लें, तो ये चीज सही नहीं है। आपको ये समझना है कि अगर इस तरह से करेंगे तो वो एक बार काम होगा, दो बार काम होगा, लेकिन तीसरी बार वहां पर आपका इमेज बिल्कुल खराब हो जाएगा और तीसरी बार लोग आपको मना भी कर देंगे कि चलो ये तो हमेशा गुस्सा करता है, गुस्सा करके अपनी काम को निकालता है। तो हमें ये समझना है कि हम एंगर फ्री कैसे हो सकते हैं। इसके लिए we will know the techniques of anger management. So after the period we will go ahead. ये कर दे सर। Management means how can we manage our anger? हम लोग अपने एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो in anger management we will know its definition, what is the positive and negative effects of anger, types of anger, cause of anger, ways to control anger, role of teachers, role of students and role of parents. एंगर फ्री जोन बनाने में पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है और स्टूडेंट्स का क्या रोल है? तो एट फर्स्ट वी विल सी अ वीडियो ऑफ एंगर मैनेजमेंट। All about the anger management. That is, how to keep your anger in your control. Let me explain this using a small story. Observe the story carefully. Once there was a little boy who had a very bad temper. His father decided to have him a bag of nails and said that every time the boy lost his temper, he had the hammer and nail into the fence. On the first day, the boy hammered 37 nails into the fence. The boy gradually began to control his temper over the next few weeks, and the number of nails he was hammering into the fence slowly decreased. He discovered it was easier to control his temper not to hammer those nails into the fence. Finally, the day came when the boy did lose his temper again. He told his father the news, and the father suggested that the boy should now collect a meal every day he kept his temper under control. The days passed, and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. The father took his son by the hand and led him to the fence. You have done well, my son, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same. When you say things are anger, they leave a scar, just like this one. You can put a knife in the line and draw it out. It won't matter how many times you say, I'm sorry. The wound is still there. We will try to understand the importance of anger management through another story. Observe it. In the early days, Buddha was traveling on foot from town to town with some of his disciples. One day, soon after passing a lake, Buddha and his disciples stopped for a rest.
He told one of his disciples, "I'm thirsty. Please get me some water from the lake." When the disciple walked up to the lake, he saw some people washing their clothes in it. And just then, a big guy began crossing the lake from the edge. The water began clouding, and the disciple did not think this was fit for Buddha to drink. He walked back to Buddha and said, "The water is very muddy and is not fit to drink." Buddha then said to his disciples, "Let us rest a little by this tree." After some time had passed, Buddha told the same disciple again to get him some water from the lake. The disciple returned to Lake immediately and saw that now the water looked absolutely clear. The mud had settled to the bottom of the lake, and the water of that was fit for drinking. Thus, he collected some water in a vessel and brought it back to Buddha. Buddha looked at the water and then looked up at the disciple. See, he let some time pass, and the water became still. The mud settled to the bottom of the lake on its own, and we got clear water. It did not require any effort. Students, finally I would like to conclude this session by discussing the importance of patience. Control your anger and don't say things to people in the heat of the moment that you will later regret. Some things in life you are unable to take back. In your life, if a friend or any person becomes frustrated and annoyed with you, even though you haven't done anything, then should you not understand that your friend has had a bad day? Be patient and just let it be. Give it a little time, and your friend will come around. Let the water be clean, and the mud will settle down on its own. Good character is not found in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop good character. In these two stories, you saw that how can we manage our anger. So I want to ask from Toki sir, what did he notice in the first video? माइक ऑन नहीं है सर In first video, when students become angry, so क्या करता है? ये होता है दिमाग। तो बताया जब जब गुस्सा होगा तब तक ये लेकिन इससे भी चिड़चिड़ा कौन और ये तो दिस इज का वही सिचुएशन स्टार्ट Okay. Now, anyone who wants to share his or her view? Pinku sir. I noticed that ठीक तो है in angry, you want to release yourself from anger, do activity, release from anger. Okay. Can anyone tell that how many nails did he hammer on the first day? Yes, Judy ma'am. 37. 37. Okay. तो पहले वीडियो में देखा कि उस जब वो बच्चा एंगर हुआ तो उसके फादर ने उसे पनिशमेंट दिया कि वो जाके जब तक गुस्सा हुआ तब तक जाके वो जो है वो नेल जो है वो निकाल में रखा
था, तो जिस तरह से वो करता गया तो ये वर्क उसे बहुत ही हार्ड लगा। उसने सोचा कि ये तो मुझे काम करने ही ज्यादा अच्छा है। जो उसके फादर ने बोला तुम रोज सॉरी बोलते हो, रोज वही काम करते हो, तो वो फिर उसको जब वो सारा नेट दीवार में लगा गया, उसके बाद उसे निकालने का काम किया गया। तो वो सोचा कि इससे अच्छा तो है कि मैं जो है शांति रहूं, गुस्सा ना दिखाऊं। तो यहाँ पर है कि हाउ कैन मैनेज वी एंगर इन एंगर मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। The at first we will know the definition of anger management. Management refers to a process. It helps us to identify the stressor. एंगर मैनेजमेंट के द्वारा हम ये कर सकते हैं, हमें हेल्प करता है कि हम कैसे सिचुएशन से उस बाहर आ सकते हैं, हम अपने आप को कैसे काम कर सकते हैं और उसकी क्या टेक्निक्स है। और ये हमें मदद करता है कि हम खुद को भी समझे, दूसरों की भी फीलिंग को समझे और दूसरों के साथ हमारे अगर हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, हम बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक के द्वारा जो है अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा सीधा डेफिनेशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट। Anger management, the ability of a person to control his or her temperament, particularly in stressful situation, to show proper behavior without losing control of one's emotion. Anger management क्या है? जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो बिना अपने कंट्रोल को खोए हुए, बिना अपने इमोशन को लूज किए हुए उस स्थिति से आपको बाहर निकलना है, उस टेम्परामेंट से आपको बाहर निकलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग योर एंगर। सबसे पहले अपने एंगर को समझिए कि क्या रीजन है आपके एंगर होने का। बहुत सारे रीजन होते हैं आपके गुस्से का, तो जब तक आप उस एंगर को आप अपने उस रीजन को नहीं समझेंगे तब तक आप बाहर नहीं निकल पाएंगे उस स्थिति से। अंडरस्टैंड एंड व्हाई इट इज हैपन। आपको ये भी समझना है, जब आप अपने गुस्से के कारण को समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझना है कि आखिर मेरे साथ ऐसा होता क्यों है, क्यों मैं बार-बार गुस्सा हो जाता हूँ, हो जाती हूँ और इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। ऐसा क्या कारण है जो मैं बिना गुस्सा हुए नहीं रह सकती हूँ। मोर लर्निंग टेक्निक्स टू काम डाउन। फिर आपको जो है वो टेक्निक जानना भी है कि आप कैसे खुद को काम डाउन कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन से आप बाहर हो सकते हैं, कैसे खुद के फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे वो आपका होम हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, कहीं भी। तो जब तक और हमें सब अपने घर में बच्चों को भी ये टेक्निक सिखाना है, स्कूल में भी स्टूडेंट्स को हमें ये टेक्निक सिखाना है कि वो बच्चे भी जब हमें घर में कहते हैं जो कि वो वही सीखते हैं। स्कूल में भी अगर हम जिस तरह से हम बिहेव करेंगे, अगर हम बताएंगे कि जब आप गुस्सा होते हैं तो किस तरह से काम काम करें, तो ये सारे टेक्निक्स जब तक हम नहीं खुद भी नहीं सीखेंगे और सिखाएंगे तब तक वो एंगर मैनेजमेंट जो है वो आपका काम नहीं करेगा। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज आवर एंगर। तो एट फर्स्ट वी विल डू अ वर्कशीट अगेन। Worksheet. You have 10 minutes for this. Must mention your name and OS ID.
if there is a situation and you have to keep your own mind that how anger affects you. You have 10 years for this.
very good. I think all of you have completed your worksheet. At first, I want Jha sir read the situation and tell about your feeling how in this type of situation you affect anger affects you. Sometimes my anger is helpful for me in doing my job in any situations. But sometimes it hurts and increasing our blood pressures, heart rate, digestion process, headache, etc. And it is just it in fact more harmful when I think that someone is very caring for me, but they are not like that. They always thinking about me that he comes for pushback or any other. At the time, the anger is very harmful to me. Okay. Can you share your incident? I like to answer the second question, like anger is a problem very generous performance at work or school. Like naturally we are facing problems, and that we are human beings and sometimes we have to face. But the main thing is how we have to overcome all these negativities. So the question is how much does this problem apply to you and how has it negatively affected your performance at the college school? Like for instance, if you work outside, like if you are professional and we have paid so many troubles at home, then you will be able, the management will be able to see your face and to recognize your personality. That you have confirmed that you have some problems. But you will have to find out how you will have to overcome all such type of adverse situations. So likewise, I have given here that we will face and adverse situations. This natural thing that it happens with every person's face. So this is the main thing you will able to see. Thank you. Thank you. It's a very well said by Rita. It is a natural emotion that anyone can face, but we want to know handle the situation. We want to know overcome from this anger. Now, I want that Manish sir please share your view. Whenever anyone not listen to me, okay, and whenever the time that you are unable to face, okay, so right now I'm going to explain this answer. Being a father, whenever you told your
should not do this because it will harmful to you because do not play with the electricity or the sharp things and after some time they get hurt. After that, I tell you that you are not to do this like happen. Okay. Thank you, Minister. Very well said. Now, Sanjay sir, please describe your feeling. Even when anger is justified, that is problem and it goes too far. That is, the outcome will be very serious and it could be respectable because we are beyond our anger situations and at that time we can't do justify what is going right or wrong. Very good, Sanjay sir. Now, Pratibha is Which one is the last one? Last one you are talking about? yes. Okay. So the headline is anger is a problem when it is too intense. And in this, how much does this problem apply to you? So in my context, I would say not at all actually. It hasn't happened yet that I had to go through such a physical aggression. इतना ज़्यादा ऐसा intense वाला अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है. And one more thing that इतना intense नहीं होने का reason now due to some circumstances nowadays spirituality attracted me a lot. So now I actually switched to that. I used to read Bhagavad Gita these days, so I can control my anger very well these days. So yeah, not at all. So, yeah, thank you. Thank you, Pratibha. Very well said. So, we can. There are so many reasons to be anger, and it is absolutely personal emotions. And there is a way to overcome from our anger. So we will know the anger management. So the purpose of anger management is to help a person to decrease anger. It reduces the emotional and physical arousal which is caused by the anger. It is generally possible to apply on the people to remove anger. सभी के लिए पॉसिबल होता है कि वो एंगर से को अवॉइड कर पाए. सभी को उस समय ये समझ में नहीं आता कैसे उस एंगर टेक्निक को अपनाएं. और उस समय क्योंकि हमारा माइंड जो है सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता है. But a person may learn to control reaction and response in a socially appropriate manner. लेकिन हम सीख तो सकते हैं, हम उस टेक्निक को जान सकते हैं, उसका अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं. So now we will know the negative and positive effects of anger management. जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव. वैसे ही हर इंसानों में भी दो थॉट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अगर पॉजिटिव थॉट आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, अगर नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन आप ऐसा गुस्सा ना आना ये तो बिल्कुल भी नहीं है. हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, लेकिन हाँ जब आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल सकता है. कभी कभी तो इसके लिए आपको जिंदगी भर पछताना पड़ता है. अभिषेक सर, do you want to say something? Okay, after completing my words, you will continue. तो कभी कभी तो बहुत गुस्सा करने से क्या होता है, जिंदगी भर में पछताना पड़ता है, समझ में नहीं आता, हमारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं. कभी कभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्ति जो है गुस्सा
नेगेटिव थॉट के बारे में ही पहले सोचना चाहिए। तो we will know what is the negative effect and positive effect. अब इसे हमें लगता है कि नेगेटिव इफेक्ट से असर पड़ता है बच्चों पे। अभी हम लोग 2 दिन पहले ही पेपर में पढ़े थे नर्मदा के एक छोटी सी बच्ची वहां पे दिव्य दर्शन में हो गई, परसों लगे थे, माथे पे टीवी लगा के गई थी, टीचर उसको रोक दी, डिसिप्लिन वाले जो टीचर थे उसको रोकी, उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास चली गई, प्रिंसिपल जी उसको डांटे और वो घर भेज दिए। वो घर जाके सुसाइड नोट की थी जिसमें वो टीचर का नाम लिख दी, इसी तरह से सुसाइड कर ली और वो सुसाइड कर दी। आज उसके घर के पेरेंट्स के तो अपने बच्चे को गवा दिए, स्कूल मुसीबत में पड़ गया और जो टीचर है वो चली गई। इसलिए हमको लगता है कि बहुत सोच समझ के भी आजकल गुस्सा दिखा रहे हैं। So we will know that how can we manage our anger, how can we show our positive attitude towards the student and towards our family members, towards our colleagues. So first, the bodily system becomes rigid and impure. Whenever you become angry, so you become you feel dizzy. You have a bad mood throughout the day, and your heart starts hardening. The love and kindness turns away from you. तो जब भी आप गुस्सा होते हैं तो बिल्कुल आप रिजिड हो जाते हैं, आपका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट भी होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है और आपके अंदर जो क्वालिटी है काइंडनेस केयरलेस वो भी उस समय दूर हो जाती है। उस समय अगर कोई कुछ बोलता है तो आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे घर में बच्चे हो या कोई भी हो, उस समय आप शायद उसके साथ एंगर के साथ भी पेश आते हैं। तो ये जो है आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। We damage or abuse others. तो जब हम गुस्सा होते हैं तो we can't understand that what am I doing. तो वहाँ पर क्या we abuse others, we harm others. तो उसमें क्या हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी डैमेज कर देते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज करते हैं, फिजिकल वायलेंस हो गया, तो उसमें बहुत सारे दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को भी नुकसान करते हैं। Here I want to give an example. Suppose there is a hospital and there is a patient who is suffering from a great pain and he has got a bad report. So for him doctor is like a god and he came here for treatment. But when the atmosphere of hospital is full of anger, bad atmosphere you can say, and the doctor is called the nurse. Again he is called the second nurse. The second nurse is called the third nurse. The third nurse is called the fourth nurse. And the fourth nurse is called the fifth nurse. मतलब ये गुस्सा करने का सिलसिला जारी था। तो at last the fifth nurse has to call the patient. So imagine what will be the condition of the patient that time who is suffering from a great pain. For whom doctor is like a god. तो उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? वो तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो एक तो उसकी रिपोर्ट खराब आई है, वहाँ पर वो जो है एंगर का जो है एटमॉस्फेयर चल रहा है और नर्स आके उसको भी डांट देती है। तो ये एटमॉस्फेयर हम क्या करते हैं, तो we learn how harm to myself or others also and broken relationship. कभी कभी गुस्से में हम ऐसी बातें कर जाते हैं जब हमारा रिलेशनशिप है वो भी छूट जाता है। तो हमें कोई भी बात में सोच समझ कर बोलनी चाहिए। ये भी है दोहा कि रहीमन साहब प्रेम का मत करो चटका है, टूटे तो भूले नहीं, भूले तो बात बढ़ जाए। तो इसलिए हमें सोच समझ कर कोई चीज बोलना चाहिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो
बनते नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से बनता है। चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हम घर में हैं, हमारे फैमिली मेंबर है तो उनसे हमारा संबंध खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि गुस्सा होने से सबके साथ रिलेशन खराब हो सकता है। तो सो वी हैव टू सी ऑल द थिंग। अब अगर स्कूल की बात कर ले तो मान लीजिए कि कोई टीचर है जिनका हैबिट है कि वो अपना एंगर का हैबिट बना लिया है, स्टूडेंट्स है वो भी एंगर का भी अपना हैबिट बना लिया है, लेकिन हम टीचर हैं, हमको समझना पड़ेगा। अगर बच्चे गुस्सा दिखा रहे हैं तो उस समय हमें समझना पड़ेगा कि हम उस स्थिति को कैसे सॉल्व करें तो ये मैटर जो है और ज्यादा वर्ष ना हो। अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो हम उसे डांट रहे हैं, होमवर्क करके ला रहा है तब फिर उसे बोले कि तुमने कैसे होमवर्क कर दिया, तुमने सही ढंग से नहीं किया, ये वहां नहीं किया, ये यहाँ नहीं किया। उस समय बच्चा सोचता है कि चलो हम होमवर्क करेंगे, क्योंकि होमवर्क करने से भी डांट पड़ता है, होमवर्क नहीं करने से भी डांट पड़ता है, तो चलो हम तभी होमवर्क करेंगे जब मुझे डांट पड़ेगा। तो वो अपना एक आदत बना लेता है कि वो इसी स्थिति में होमवर्क करेगा जब उस टीचर उसको गुस्सा दिखाएंगे, तो इससे क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को ये नेगेटिव इफेक्ट को दूर करना, और क्योंकि एंगर फ्री जोन बनाना है तो इसमें स्टूडेंट का कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी टीचर को समझे कि टीचर भी कितने ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, कितने टायर्ड होते हैं, और उस समय अगर उनको होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आ रहे तो उस समय टीचर भी एक्सपेक्टेशन लेके जाता है क्लास में। तो ये सबको मिलकर ये समझना है कि हम उस स्थिति को कैसे एटमॉस्फेयर को कैसे एंगर फ्री बनाएं। Now we will talk about the positive effects of the anger. Anger कहीं कहीं सही भी होता है, अब एंगर एक्सप्रेस करना जरूरी है। आप अगर एंगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, और स्पेशली अपने राइट्स के लिए आपको बोलना ही है। मान लीजिए कि किसी की आदत होती है कि उसको कुछ भी बोला जाए, उसके लिए गलत बोला जा रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये सही नहीं है। एंगर को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। After anger is a part of natural response that helps us to protect ourselves. तो anger क्या करता है? Energize us to do something. अगर आपके शरीर के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने राइट्स के लिए आप एंगर दिखा रहे हैं, इट एनर्जाइजर आपको कुछ करने के लिए वो ऊर्जा देता है। मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि there was a news anchor whose name was Rekha, and she always faced criticism that she was not fit for the acting, she was not fit for the television. She became angry, but she used her anger as a fuel, and she proved this as to give an example. और वो एक एग्जांपल बनाने की कि वो टीवी में एंकरिंग में वो कितना अच्छा कर सकती है, तो उसने अपने एंकर को पॉजिटिव वे में लिया, नेगेटिव वे में नहीं लिया उसको। तो ये एंकर के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। एनीवन आपको असर्टिव एंकर आपको असर्टिव रखने आप जो है पॉजिटिव सोचे, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस सिचुएशन का कैसे सामना कर सकते हैं। तो ये आपको एंगर इस चीज के लिए भी आपको इंकरेज करता है इन अ पॉजिटिव वे। हेल्प अस टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव करने में मदद करता है। मान लीजिए आपको वर्क प्लेस में या आपके क्लास में या आपके नेबरहुड में कोई आपको बार-बार गुस्सा दिखा रहे हैं, बार-बार आप पर गुस्सा हो रहे हैं और आप अपने राइट्स के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उस जगह पर ना तो आप काम कर पाएंगे, ना उस माहौल में आप रह पाएंगे। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको फिर अपने राइट्स के लिए वो एंगर दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरों को आपको दबा के रख देंगे, तो वहां पर आपको एंगर जरूरी है। इसी का वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ऐसे होते हैं जो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा है तो आप अपने फीलिंग को जरूर एक्सप्रेस करिए। इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आपको फिजिकल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड से, अपने कॉलीग से, अपने फैमिली
बनता है। तो हमें पहले रिएक्ट करने से पहले हमें थिंकिंग पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, ऐसा कहीं भी आगे जाने के लिए और कुछ करने के लिए, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो अगर एंगर में नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, एंगर में पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि एंगर बुरा है, एंगर अच्छा है, लेकिन वो भी एप्रोप्रिएट लेवल में होना चाहिए। एक्सेसिव एंगर बुरा होता है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट्स है, तो आई वांट टू शो यू थ्रू अ शॉर्ट एक्ट। So I would like to invite Meena ma'am, who is playing a role of a teacher who has a negative attitude. Your assistant, who is playing a role of a teacher who has a positive attitude. And there are 4 students. Pushpa miss, Nikhil miss, Suniti miss, and Priti miss. Please sing. Yes, yes, for acting you can use your quiet one. If this is like मैम ठीक है मैम। Good morning, all of you. Good morning, students. What are you doing? Only talking with each other. This is the manner. Huh? Yesterday, what homework I have given you? Nikha, stand up. Have you done your homework? Show me. Is this the way you have done it? This is a blow. See, you have made the equator on the top of the blow. Where is the equator I have told you? Don't you know even? Yesterday I have told you so much time that equator divides the earth into 2 equal parts. And you have made it at the top of the globe. Very poor performance, Nikha. Sneha, what have you done? Show me your homework. I'm really sorry, ma'am. I wasn't able to complete homework yesterday. Why? Every day, Sneha, you make such a type of excuse. This you have made your habit. This is not that good manner you have to do. Ma'am, because I was busy with my father and so that's why I couldn't manage my time effectively. That's why homework not completed, ma'am. No, such type of excuse you may always make, Sneha. This is not a thing. Show me your homework. Why you have not done it? I'm sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am.
And ma'am, I couldn't understand whatever you explained yesterday. You are blaming to me. You are not understand it. Yesterday I have told you, teach you so much many times for the goal. And yesterday when I was asking from everyone, you all said yes ma'am, yes ma'am. And today you are saying that you are not understood it. You are making excuse. Yesterday you were talking with Suniti, and now you are saying you have not understood the goal. Many times. No, I am not going to explain it again. Go and stand back of the class. Absolutely. Neither mom is always very respectful towards us and treats everyone equally. It creates a positive and inclusive atmosphere. If you notice, Suniti, Venus and bad behaviors impact our classroom. Teachers who Teachers who disrespectful and to make us feel bad as not good for effective classroom. क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया लेकिन फिर भी मैंने डर से नहीं पूछा मैम से दोबारा कि मैं दोबारा से पूछूंगी क्वेश्चन तो मैम फिर से गुस्सा करेगी और फिर हमें समझाएगी कि नहीं दोबारा एग्जैक्टली जब मैम ऐसे बिहेव करेंगी तो हमें डर लगेगा और डर से हम पूछेंगे भी नहीं अगर हमें समझ में भी नहीं आएगा तो फिर हम मैम से पूछेंगे नहीं उसकी मैम समझ में नहीं आए मैम बहुत डांटती है मैम सब कुछ पूछने से बहुत डर लगता है पता नहीं क्या बोलेंगे और मान लेगी तो इसलिए मैंने डर से नहीं पूछा हाँ सही बोल रही है बहुत डर लगता है ऐसे में I agree. Positive attitude will make us feel comfortable to ask questions and share our ideas. It encourages active participation in class actually. Now, Devasis sir is Mr. John sir, who has a positive attitude towards students. Good morning, sir. Good morning, students. Sit down. Okay, today I think this is a very happy classroom. Yes, sir. I think you all are very happy today, na? Yes, sir. Okay. Okay, now I am going to start the chapter, but before that I think I should start checking the homework. Not checking, means I want to see the homework. I hope everyone has done the homework. Okay, Nisha, have you done the homework? You please stand up. Okay, very good. But you need some improvement over here, okay? Okay, sit down. And Sneha, you please stand up and show me your homework. Yes. I'm sorry, sir. For what you are sorry? Sir, yesterday I wasn't able to complete my homework because I was busy with my father and so I couldn't manage my time effectively. That's why homework not done. Oh, means you have not done your homework. But you should not give the excuse in that way. You have to complete the homework, okay? So you have to use your time. You have to make a balance, okay? You need to help your father, but at the same time you have to also take care of your school homework which is given to you, okay? Okay. Thank you for understanding, sir. I would appreciate if you guide me how to manage my time and workload more effectively. Thank you. Okay, sure, I will help you. I am here to help you. Yes? Okay, I will help you. See, John sir, good behavior, positive impact our classroom. Exactly, it's demoralizing when the teacher doesn't give us the support and encouragement we need. It can make us doubt our abilities and hinder our progress also.
मुझे तो जॉन सर के क्लास में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर किसी भी चीज़ को किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाते हैं और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा भी पूछे तो वो अच्छे से समझाते हैं और हमें गुस्सा नहीं करते हैं। इसलिए जॉन सर के क्लास में हमें बहुत अच्छा लगता है, तो चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। जॉन सर बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमें डर नहीं लगता है, उससे कुछ भी हम लोग पूछ सकते हैं और हमारे जो हमें डर लगता है वो हम लोग उनके सामने प्रकट कर सकते हैं, हमें डर नहीं लगती है कैसे, और बहुत अच्छे से वो हमें जो भी प्रॉब्लम होता है वो हमें समझाते हैं। Okay, thank you very much. Thank you all of you and behalf of you saw here what is the positive attitude, what is about self-improvement and transformation. And you saw here. So, now there is again a worksheet you have to do. I think you all enjoyed this act. After this worksheet, you will know the types of anger. In this worksheet, there are some words you have to put in do's and don'ts.
I think all you have completed. So there are some words. According to your own view, you have to put in do's and don'ts. Shyamal sir, according to you, what words are should be in do's? First, remain calm, ask for help, relax, find a calming area, close your eyes and calm, remain positive, read for a while, sometimes show respect, chill out, wind myself down, listen to music and have an open mindset. Okay. And now I want to ask Archana which words you put in dots. Spin. Yes. Kick. Destroy things. Fix. Take it off. Break the rules. Hate bless others. Very good. Now I want to ask from Animesh sir which words we put in dots. Only one word. Others you do. Okay. Now I want to ask from Jha sir which words you put in blues. Remain calm, ask for help, relax, find the calming area, close your eyes and count, remain positive, take the while, wait for a while, listen music, show respect, have an open mindset, etc. Very good. Thank you, sir. Before going ahead, I want to know your views about the positive effects and negative
effects of the attitude of our behaviors on the students. At first, Manish sir, please share your view, both in negative effect and positive effect. And then you always classroom to us. And it creates, or I can say that it affects our working ability. So we have to, we don't have to act in class, but the situation arises that we have to be anger. We have to show our angers to our positive words. ऐसे कहावत है कि भय बिना भीति नहीं, ठीक है ना? तो बिना डर के कहीं कोई बच्चे काम नहीं करते, तो थोड़ा सा तो डर दिखाना पड़ता है, ये जरूरी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डर दिखाना जरूरी है, लेकिन उसमें पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे अगर करेंगे तो फिर अगर हमसे एग्जाम्पल जो बहुत अच्छा करता है कि अगर हम एंगर पे बहुत ज्यादा दिखाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और हमारे सभी चीज पर असर पड़ जाएगा। एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से रांची सूर्यनाथ पब्लिक स्कूल का है कि वहां पर एक बच्चा साइकिल चोरी में पकड़ा गया और वो बच्चा कल्प्रिट था। तो जो टीचर को पकड़ेगा तो उसको ऑफिस में ले जाया गया, गार्जियन को कॉल किया गया और बच्चा क्या किया, बाद में सुसाइड नोट लिखा कि भाई मेरे पे बहुत मेंटली हैरेसमेंट किया गया, जिसके चलते आई एम गोइंग टू डाई, और वो सुसाइड कर दिया। उसके बाद उस टीचर की जॉब भी चली गई, स्कूल में परेशानी आ गई। तो हम लोग किसी चीज का ना बहुत एंगर फ्री कूल माइंड होकर के काम करना चाहिए। ओके, Thank you, sir. Very good. Now I want to raise Rohit sir. Please share his view. Both positive and negative. Anger causes bad impact to our life. Due to anger, we can't work freely. Anger can affect someone emotionally. It can, in our job, it can create a worse situation. Due to anger, it can hard to handle that situation. But its good effect is that due to anger, we can handle the situation such as in this situation. That's all. Thank you, sir. Please give the mic to Upendra sir. Upendra sir, please share your views. Mohita ma'am, twice. Mohita ma'am, please share your views. Please share everybody first. Good morning, everyone. Good morning, sir. I will say कि एंगर यानी कि जो गुस्सा है वो हम लोग उसको बर्बादी की तरफ ही लेता है। तो हर समय गुस्से में रहना एक नेगेटिविटी है, हमेशा हमें गुस्से में नहीं रहना चाहिए। या फिर जो भी हम फैसले लेते हैं वो हमेशा गुस्से में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी फैसला लेना चाहिए। इससे हमारे लाइफ पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। Thank you. Pragati miss. एंगर का नेगेटिव इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं कहीं एंगर होता है वो पॉजिटिव भी आता है। जैसे स्कूल में आप डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर हमेशा पोलाइट रहिएगा तो आप मेंटेन नहीं कर सकेगा, वहाँ पे कभी कभी एंगर की भी जरूरत होती है। इसलिए एंगर का बैड इफेक्ट तो है, लेकिन कहीं कहीं करना पड़ता है एज ए सिचुएशन, जैसा सिचुएशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग। Appropriate level of anger. Okay, very good. Devashish sir. Yeah. Anger has both positive and negative effect. To some extent, if we are showing the anger, then things will happen according to the order. Just now, the previous ma'am has said, if we want to have anger in a positive way, if you think it,
then we can see that things will go according to the order. Suppose that if students are going to the class from the ground, then they need to be in discipline, they need to be in line. And in some case, we need to understand the problem of the students. In that case, we have to not show the anger in that way. Thank you, sir. Kamil, sir. I found many times in our school that there are some situation came as we are the part of management, Paradivesh, Abhijna sir, and Amit Kumar sir, and other teachers also for their respective places. Certain things done by the teachers or the students should be noticed and should be timely recalled and should be timely rectified, because these are the positive effects of anger. Without this, we can't manage the things properly, can't manage everything. So, you have to show anger sometimes, but this should be a positive way, not in a negative way or negatively impacted to the people. So, you have to really feel that situation also, and you are also the part of that. So, try to help and manage everything for the school and management, and not show the anger in a negative way. So this is one of the daily life situations we have faced here today. So thank you. I hope this will be understood by every teachers. Thank you. Thank you, sir. So we saw here the different views about the negative and positive effects of the anger. Now we will know the types of anger. Next question. We can see here there are three types of anger: passive aggression, open aggression, and assertive anger. So if we deal with the anger, the best way to approach is assertive anger. सबसे अच्छा तरीका है assertive anger आपको अप्रोच करने का. So in passive aggression, this type of anger, many persons don't like to express their anger. They even they don't accept that they are angry. इस एग्रेशन में लोग गुस्सा तो होते हैं, लेकिन स्वीकार भी नहीं करते कि वो गुस्सा है, गुस्से में है. They remain in the silent mode. वो तो भरभरी कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि वो गुस्सा है, अनहैप्पी होते हैं, लेकिन वो अंदर ही होते हैं. तो ये जो पैसिव एग्रेशन है, ये सबसे खराब, जो एंगर का जो टाइप है वो सबसे खराब है. तो if this is people who are passive aggressive are indirectly aggressive rather than being directly aggressive. So they give you the silent treatment for no apparent reason, and when you will try to ask him what is the reason, why are you angry, what is bothering you, what are you, then he will or she will reply that I am fine, nothing is bothering me. He slammed the cupboard, he slammed the door, and he expressed his anger and happiness not verbally. वो verbally आपको दरवाजा पटक देंगे, कबर्ड का दरवाजा पटक देंगे, और लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं एंगर हूँ. आपसे वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपसे वो शेयर नहीं करेंगे. वो दूसरों को बताएंगे कि मैं गुस्सा में हूँ, मुझे उस बात से दुख हुआ है, लेकिन आप पूछेंगे तो वो आपको शेयर नहीं करेंगे. तो ये जो आपका एंगर है, ये ओपन पैसिव एग्रेशन कहलाता है. नाउ सेकेंड इज ओपन एग्रेशन. तो एग्रेशन मीन्स क्या हो गया? एक्सेसिव एंगर. इट इज नॉट फॉर एंगर. ओपन एग्रेशन में आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, आप उस गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो बोल नहीं रहे हैं. ओपन एग्रेशन. On the other hand, many people have a tendency to lash out in anger or rage, becoming physically or verbally aggressive, and can oftentimes hurt themselves or others. This is called open aggression. और
ओपन एग्रेशन में क्या करते हैं, या तो वो चिल्लाते हैं, शॉटिंग करते हैं, या फाइटिंग करते हैं, फिजिकल वायलेंस हो गया, हार्म अदर्स, एब्यूजिंग, ब्लैकमेलिंग करते हैं। बहुत सारे इसमें आते हैं जो ओपन एग्रेशन में आते हैं। तो वो मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाएंगे, आपके क्लासमेट के बारे में, आपके कॉलीग्स के बारे में, और आपका क्रिटिसाइज करेंगे। तो बहुत सारी चीज जो है वो ओपन एग्रेशन में आते हैं। नाउ थर्ड इज assertive anger. So the healthy way to deal with the anger is the control and confident, listening and talking, and handle the situation with the assertive manner. This assertive anger can help relationship to grow, and it means thinking before you speak, being confident in how to deal with the situation. It means you don't have to raise your voice. You are really trying to understand what the others are feeling, what you are feeling, what is the situation, and you have to demonstrate that you are mature and you care your relationship with others, with your colleagues, with family members. Forgiveness is always important, and if a person has obliged you to be open always to be free, and first think about the situation, and if there is a mistake of that person, in that time you have to forgive it, consider about the situation, and this will be helpful to flourish your relationship with others. So there are these three types of anger. तो ये सबका अपना अलग अलग है, वो आप खुद समझ सकते हैं कि आप में किस तरह का एंगर है। आप में पैसिव एग्रेशन है, ओपन एग्रेशन है, या एसेटिव एंगर है। एसेटिव एंगर जो है वो सबसे अच्छा तरीका होता है गुस्से होने का। इसमें क्या है कि आप एंगर तो हो रहे हैं, गुस्सा तो है, लेकिन आप उस सिचुएशन के साथ आपको डील करना आ रहा है कि आप कैसे डील करेंगे। आप उस सिचुएशन को समझ रहे हैं, खुद के फीलिंग स्थिति को भी समझ रहे हैं, दूसरे के फीलिंग को भी समझ रहे हैं, और दूसरे को आप माफ करने की क्षमता भी रखते हैं कि अगर आप गलती उसकी भी है, वो आपके सामने आके अपोलाइज कर रहा है, माफी मांग रहा है, तो आप उसको माफी दे रहे हैं, चाहे गलती कितनी भी उसकी क्यों ना हो। It is the best way to be anger. Now we will know the causes of anger. Often people express their anger in different ways. There are so many causes of anger. You can see here frustration. तो जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन एंगर के रूप में निकालता है। इरिटेशन, अगर आप गुस्से में हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, और फिर वो अगर क्लास में गए या कहीं और गए या घर में गए तो वो अपना सारा इरिटेशन जो है वो गुस्से के रूप में निकल कर बाहर आता है। Abuse, unfairness and stress. Can anyone want to describe about this? दीपक सर, जा सर। Unfairness is that we are not fair with all the students or all the colleagues who are working or with us. So we must fair to all of us in the any situation. If we deal with someone in the way that help us, and in the other way that my opinion is disheartening to the other, ये नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसा फेयरनेस रखना है, दैट इज अनफेयरनेस। और अनफेयरनेस यदि हम लेके चलते हैं तो शायद एंगर बढ़ेगा। एंगर को डिसॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो उसमें फेयर लाना जरूरी है। एब्यूज, अगर कोई हमारे साथ एब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहा है तो स्वाभाविक है उस समय हम गुस्सा होंगे, और ये भी हमारे गुस्से का कारण होता है। जैसा सर ने बताया अभी कि अगर
एक वर्क प्लेस में या क्लास में चाहे आप कलीग्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, आप किसी एक अलग अलग सबके साथ बिहेव हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है, किसी के साथ एक के साथ जस्टिस हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है वहां पर आपको गुस्सा आएगा ही। स्ट्रेस, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, अपने स्ट्रेस को बाहर नहीं कर पाते हैं और उस समय अपना स्ट्रेस भी आप एंगर के रूप में निकालते हैं। यस यस Yes, we know from the intervention. Actually, I want to ask you that does you explain use policy? If someone uses a bad word or uses word to use and before you, so you just explain, but what should we do after that? Should we or do that? What should we do actually? How can we handle it at that moment? If someone you as using words, then it is natural you will be angry. But there are some techniques that you can calm yourself by these techniques, and you will know it later. That what are the techniques that you can calm down. As for any other sources that we think about the Mahatma Gandhi, that is the best way to resolve conflict using words from others. Because we are talking about the reason, causes of anger, and अगर causes है, कारण है तो उसका solution भी है, आपको उसका steps भी है, ways भी है, उसको कैसे आप control करें। Humiliation, कभी-कभी स्टूडेंट्स को भी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, टीचर्स को, सभी को, ये नहीं सिर्फ स्टूडेंट टीचर, सबको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। उस समय भी हमें क्या होता है कि वो अपने ह्यूमिलेशन को एंगर के रूप में बाहर करते हैं। रिजेक्शन, अगर मान लीजिए कि हम वेल क्वालिफाइड हैं, तब सभी तरह से क्वालिफाइड हैं, फिर भी हमें रिजेक्ट कर दिया गया, तो वहां पर भी हमको क्या होता है, गुस्सा आता है, एंगर आता है। कंफ्यूजन, लॉनलीनेस, जब हम कंफ्यूज होते हैं, लॉनली अकेले होते हैं, तब भी वो अकेले होते तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने लॉनलीनेस को हम दूसरों पर उनको गुस्से के रूप में निकालते हैं। हार्मोन, जब हार्मोन चेंज होता है फिजिकल चेंज, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, और इस समय भी गुस्सा जो हमारे मूड जो है वो चेंज होता है, और ये गुस्सा आने का सबसे जो मेन रीजन है वो हार्मोन चेंज है। फिजिकल पेन, जब हम फिजिकल पेन से सफर करते हैं, क्रोनिक पेन होता है, स्वाभाविक है हम लोग इस पेन से गुजरते ही रहते हैं, उस समय भी हम जब बहुत ज्यादा हमारे ऊपर भी लोड आता है या बहुत ज्यादा कुछ प्रेशर आता है, तो स्वाभाविक है हमें गुस्सा आता ही है उस समय। मेंटल है तो अभी गुस्से का प्रॉब्लम, आप हेडेक हो रहा है, कोई बहुत बड़ा इशू है, आप पे मेंटल प्रेशर है, तो वो भी हम एंगर के रूप में निकालते हैं। जेलसी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही श्लोक में बताया था, श्री कृष्ण जो हम श्लोक भगवद गीता श्लोक में, कि एंगर एवरी गिल्ट, ये जो है मेंटल का जो इम्पोर्टेंट मेन डिजीज है, तो ये जब होता है जेलस और गिल्ट, उस समय हम समझ ही नहीं पाते कि क्या अच्छा क्या बुरा उस ईर्ष्या में, उस गिल्ट में, और उस समय हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हमें खुद भी पता नहीं रहता। तो you can see here there are so many causes of the anger, but there are so many ways to calm down our anger. So now, yes. I will more elaborate about the hormones here. Yes, you can better. Because we are biology teachers. Yes. In our body, there are two kinds of hormone released during such kind of situation. When we are very stressed or when very anger, going to be angry. At that time, a hormone releases which is called emergency hormone from our kidney.
above of the kidney, that is the adrenal gland, and it raises, and when it becomes in the peak, our anger is at also at the peak. And at the same time, the anger hormone is released from that part of the kidney, and that suppresses the anger also. So our body is self-sustaining how to manage the anger and how to raise the anger. So we, if fully or calmly do the things, then you can manage everything. So chemically our body can adjust ourselves and for the entire environment. Thank you. Thank you, sir. So there you saw that there are so many causes. Now I want to know your personal view. What is the reason of your anger? There are so many causes. आप भी गुस्सा होते हैं, कभी-कभी गुस्सा होते हैं, और गुस्सा का यहाँ पर बहुत सारा कारण है. तो मैं जानना चाहूँगी कि आप अपना पर्सनल बताइएगा कि इनमें से आप कब कितने कारणों में आप कब गुस्सा होते हैं, आपकी गुस्सा होने का क्या कारण होता है, उस पर मिस्टेक. गुस्सा होता तो नहीं रहता, लेकिन गुस्सा तो आता होगा कभी-कभी. कभी-कभी गुस्सा आता है. जैसे क्लास में बच्चे जब बार-बार एक ही चीज को करते हैं, उन्हें मना किया जाता है और वो बार-बार एक ही काम जो नेगेटिव है उनको करते हैं, तब गुस्सा आती है. नहीं तो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, बच्चे को जो गलती होता है उसको देखते हुए भी अनदेखा जैसे कर देती हूँ, उसको क्या समझा देती हूँ तो आपको ऐसे नहीं करना है. और जब ज्यादा हो जाता है तभी मैं गुस्सा. Anger is natural. Now, Meenal ma'am. I feel anger when I get frustrated or irritation and rejection. When my work I have done and I not get support from family or friend, at that time I get many times very anger at that time, because I think I am perfect in the family or with a friend or relative. That time I get very anger, and in school I get due to frustration and irritation. That's it. Thank you, ma'am. It is true that when we did hard work and family members will not support us, then it will be the cause of the anger. Now, Mila is Julie Brass. Yes. It happens with me when I get confused. Sometimes in life, what happens that, like in a personal, we are surrounded with many problems. So we are unable to tackle that problem in a very smooth manner. So in order to balance the personal life and the professional life, sometimes we get anger very soon. But even I have learned to manage that anger. It is very good that you manage your anger, but anger is a natural part of every human being. Now, Urmila is गुस्सा करना वैसे स्वाभाविक है, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं क्योंकि नजरी की टीचर हूँ तो कंट्रोल भी करना पड़ता है. ऐसे तो बच्चे अलग करते हैं, उनमें भी मेरा गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन मैं उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो, और प्यार से वो समझते भी, उनको किसी चीज दिखा कर कुछ कर देती हूँ वो समझ जाते हैं, प्यार से समझाती हूँ समझ जाते हैं. को समझाते हुए गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, फिर आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, ऐसा बता के क्या भी मैं बहुत कुछ कवर में डालूंगी, तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, तो मैं घंटे में आपको कवर में डालती हूँ. तो उसका तो मुझे भी आता है, लेकिन क्योंकि मैं नर्सरी की टीचर हूँ तो मेरा नोट करना पड़ता है. Thank you, ma'am. I think yes, it is true that there are a lot of lessons in the teachers.
Now, there is one seat again for you. After that, you will see video that how can we control our anger. Please, I request you to all please keep silence. Especially, बड़ी जोर हंसते हैं दादी है Surrender free अभी है सरेंडर कर दे in this worksheet I think you have completed. In this worksheet you have to make a list what makes you feel angry and each
and every teacher has to share his or her view either in Hindi or English. Each and every teacher. I will start with Amit Kumar sir. एक दो वर्ड भी बोलिए सर काउंट संदीप सर या I feel angry when the state, sadness, abuse, unhappiness, stress, physical pain, rejection. Thank you sir. Seven sir. There are quite various situations when I feel angry. Hectic schedule of work. This is one of the cause of many of us feel angry. We feel angry, but we have to manage. And in Hajalibagh we experience when I caught in a busy traffic. I am very much angry at the traffic. It is a very good reason. Traffic problem. And sometimes some different situations that when I am very much alone, nobody is there, so I feel distressed at that time. And another situation came when somebody is scolding me for good and bad or something. So these are the some situations where I feel angry. Thank you sir. Please pass. Jha sir. The most of the words are there on which we are angry. But one word is here, which I write here, we feel experienced day-to-day life in our working area. That the new way of my words, where I am in my job, and I instruct something, some words, some rules, and my colleagues or my students are not obey that one. At that time, I feel angry. I will give one or two examples of this one. Previous 3 or 4 days, हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जिसमें अटेंडेंस छूट जाता है सुबह सुबह, तो हम लोग उसमें क्वेश्चन मार्क करके सोचते हैं कि भाई छुट्टी के टाइम में जा करके वो कर लेंगे। लेकिन परसों मैंने ये भी देखा, आप लोग सभी ने देखा, आफ्टर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ भी है, बट छुट्टी के टाइम में वो करेक्शन साइन वहां नहीं हुआ। तो ये हम लोग की ड्यूटी होती है और शायद सबके साथ ऐसा होता होगा कि वो कुछ बोलते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं होता है, ये जॉब का बात है। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ जिस पोजीशन पे जो है और उनको जो काम मिला हुआ है वो करते और वो सही नहीं होता है, तो शायद अपने आप में एक गुस्सा आता है। Really, it is one of the main reasons not follow. It is the main reason in our working place that we are feeling angry on someone. But at that time, after going from there, away from there, we are very relaxed. Thank you. Sir. Next one. Please, Pak. Well, I have written so many reasons on the basis of anger. First of all, my personal view, if you want it, that I usually used to be angry if I see some injustice, especially among women. This is my from childhood. This is my habit. So I cannot reduce this habit. So I have seen so many innocent persons who are hearing that I know that he or she is innocent. However, he is accepting. However, he is listening. The third person's abuse, the third person's that he or she is torturing. However, in so many innocent people in our society, they
but they are helpless. You can say. Outside or inside in our home also, and especially women, we can say that male generally being tortures women. Still, we cannot declare really this is still doing. So we are right sometimes, but however we have to face such worst situation. So we know we are innocent. We know that we are right. We have done good things. However, they are blaming that no, you have done not good things. So many things one can I do. Okay, thank you, but it is your totally personal view. Now, Archana, when the students not listen to their attendance carefully, उसमें बहुत गुस्सा आता है और आपस में बात करते रहते हैं, चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए बच्चों को अटेंडेंस को सुनते नहीं है, उस वक्त बहुत ज़्यादा इरिटेशन उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो होमवर्क की करके नहीं लाते, इसमें बहुत बुरा लगता है। thank you, ma'am. Now, pass back. So, Mira, क्लास में सोच होता है और कोई बच्चे नहीं होमवर्क नहीं करके आते हैं, जाके खुद ध्यान नहीं देते हैं, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जब कोई मेरी बात नहीं मानता है या फिर जब मुझे डिफिकल्ट में होता है या फिर स्ट्रेस होता है, फिर मैं ज़्यादा थकी रहती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। thank you, ma'am. इसलिए गुस्सा सभी को आता है, सब जानते हैं कि सिर्फ काम नहीं करना है, लेकिन स्कूल में ज़्यादातर गुस्सा होने का सबसे बड़ा कारण है बच्चे शोर बहुत करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको जितना भी समझाया जाए तो बात करना तो सुनते हैं और जब टॉपिक अपना रहे टेबल पे और उस समय खासकर बच्चे शोर करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। बट गुस्सा मतलब बोल के ही समझाते हैं, गुस्सा बोलते हैं उनको भी शांत करिए, ऐसे बात करिए, समझाना पड़ता है कि अगर आपको सोच करके तो आप लोगों का टॉपिक है कैसे करना हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। thank you, ma'am. Uma, When I am in this phase at that time, I feel very thank you. Fazia, miss. एक्चुअली मुझे तो लोग सब कम आते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे बहुत इरिटेट It means irritation is the main reason of your anger. Okay. Anger is the part of our mind. Okay. And our past behavior makes me angry because we are taught that everyone is equal in society. And when you are doing your work in the proper manner and your work is not counted as equal, then it will be that it is not fair. So I think unfairness behavior, biased behavior makes me angry. That's all. Thank you, sir. Pass, sir. आज के समय गुस्सा होना बहुत आसान है, कोई भी चीज़ से आदमी तुरंत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई छोटा सा बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कुछ मेरे लेते हैं, स्टेज बना देगा और ही मतलब समझ नहीं सकता। मैं ज़्यादातर एग्री तब हो जाता हूँ जैसे कोई मैं सही रहूँ या मुझे गलत ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर ये भी जानेंगे कि हम लोग अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। When three games cricket I was with you, you become tired. Well, I was taking geography class. In geography, you have a problem. You have a problem in math class, in SST class, in science class, and you are eliminated. It means that it is very clear that from tomorrow we will manage the class
other than geography for him. Look at this. Abhishek sir. जब कोई छुट्टी की बात पढ़ रहा है तो बोलता है तब जो नहीं हुआ है इस तरह का बात हो रहा है तब गुस्सा आता है। Thank you. Always sir. हम सही जा रहे हैं हमारी बात को गलत साबित किया जाता है तो गुस्सा आ जाता है। Aditya sir. Sometimes on that I'll be very happy. Now pass your mic to Tinku sir. It's so like a important point ये बोल रहा है कि जब कुछ काम को कर रहे हैं तो काम ना Tinku sir, be positive. It will be happen one day. Jagat sir. I mean angry. Usually we always watching in the school bus or in the class also. Some students are abusing each other. Always. और जब आप सामने रहे चुप हो जाएंगे उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। ये हमने बस पर भी ये वॉच किया और ये कुछ समय बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब आप में आपके सामने आपके बच्चे इस तरह के म्यूजिक कर रहे हैं दैट मींस आपने उनको गलत सीखा है। ये मैसेज बहुत है। Thank you Chandan sir. Deepak sir. I think I agree basically when I am irritated or frustrated from overload. When you are overloaded, then you become irritated and you feel angry. Ravi sir. We will know the ways to control anger, but before knowing the way, we will see a video how can we control our anger. Every little thing, he would easily get angry at anyone and would even use foul language sometimes. Yet parents and teachers often lectured him to control his anger and improve his behavior. Stop irritating me! Rick has a soft corner for painting. So on his 7th birthday, his mum gifted him a canvas and a palette of colours. What's this for? It's to help you express your anger. Whatever you feel angry about, you can paint it on the canvas to get rid of that frustration. Try it. Rick painted a building falling down. It's what I want to do to my school. I hate everyone there. The kids keep bullying and criticizing me. I feel so angry at them. Oh, Rick. Okay, do it again. Paint whatever you feel inside and whatever you think you want to do. Rick took another sheet and started painting. From that day, whatever made Rick angry had to be painted on a sheet. By the weekend, Rick had painted several disturbing paintings. His mum went to his room and found some of the paintings on the wall. She collected some and took Rick to the garden with his paintings. Tell me, Rick, what are these paintings about? It's about those kids that always act so smart. They flash their expensive clothes and phones and make me look like a loser. It's about the teachers who keep saying to me that I don't perform well enough.
It's about Dad, who always keeps reminding me of how well he used to do when he was my age. Now think and tell me what is the one thing common in all of them. I am angry at all of them. Exactly. You reacted to each person who said something bad about you or criticized you. Your anger was in their power, not in yours. You're right. In fact, while painting this, I threw the colors on the paintings, imagining that I was throwing something at them. I never tried to understand them and was getting angry all along without any reason. So each bad word that you said to them left a hole in their heart. Those kids did well for themselves not to put you down. Your teachers tell you to improve because they know your potential, and Dad compared himself with you only to inspire you, to tell you that if he was able to do it, so can you. You're right, Mom. But what do I do when I get angry? It's always like anger overpowers me, and I am never able to think properly. Controlling anger can be simple if you are committed to controlling it. Whenever you get angry, take a deep breath and count to 20 before you react. Think happy thoughts and divert yourself from that situation. Slowly, you will be able to control your anger. Thanks, Mom. I will try this, and I will paint it too. After a long time, he hugged his mom and felt good. With time, Rick's behavior changed. He was a much happier kid than before and started treating everyone with love. His paintings too had changed, and they were less about anger and more about happiness and love. All of this was possible as he had learned the art of having control over his. You noticed in this video that anger can be controlled. Controlling anger can be normal if you are committed to controlling. तो इसमें आपने देखा कि बच्चा जो गुस्सा था अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, फादर से, स्पेशली फादर से और अपने दोस्तों से, तो वो किस तरह से उस एंगर को, उसकी मदर ने उसे इंस्पायर किया कि वो उस एंगर को काम डाउन करे और वो क्रिएटिविटी के साथ पेंटिंग करके उसने अपने सारे गुस्से को उसमें कलर्स के द्वारा निकाला और अपने एंगर को उसने काम डाउन किया. तो can anyone tell in the first painting what did he paint? फर्स्ट पेंटिंग में उसने क्या पेंट किया था? फर्स्ट First for that children who's wearing good clothes. Yes. In the first painting, he painted about those kids who acted as a so smart. And in the second video, in the second painting, no. In the second video, he painted about his teacher who keeps saying that he doesn't perform well. Third one is about his father, who always said to him that how he used to do when he was in his age. वो उसके एज में कैसा करते थे, लेकिन वो उस समय इन सभी से गुस्सा करता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो सारे जो है उसको इनकरेज करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं. तो नाउ वी विल नो द वेज ऑफ हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर. At first, recognize your anger signs.
beats faster, you breathe more quickly, and preparing for your any action. And you may notice such other signs as a physical and mental health problem. तो आपको खुद ब खुद कभी गुस्से में कभी होता है कि आप बहुत मतलब आपकी जो हार्ट बीट है बहुत तेज हो जाती है, आप मतलब बहुत मेंटल और फिजिकल इश्यूज होने लगते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइंस हैं कि वो आपको उस साइन को आपको खुद पहचानना है कि आपने वो कौन सा रीजन है, कौन सा वो काउंट है जिससे आप एंगर हो रहे हैं। अगर आप अपने एंगर के कारण को पहचान जाइएगा, रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, तो आप उस एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। काउंट 1 to 10 स्लोली। जब आप गुस्सा हो रहे हैं, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे काम डाउन करें, तो यू काउंट 1 to 10। When you will count 1 to 10, then you will feel relaxed. Your mind will be relaxed, your body will be relaxed, and you feel calm. Next, breathe slowly. When you are in anger, then take a long breath. After relax it slowly, so you will feel relaxed then, and your anger will be reduced. Exercise. Exercise like running, walking, swimming, meditation, yoga. There are so many things. From this, you can keep yourself out from the anger. Calm down. Calm down. You sit lonely and feel about the reason. Think about the situation and stay calm for some time yourself. आप चाहिए तो अलग कमरे में चले जाइए, अपने को सबसे अलग कर लीजिए और थोड़ी देर बिल्कुल शांत बैठ जाइए। तो आप जो है उस समय आपको एंगर तो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और थोड़े से आप रिलैक्स महसूस करेंगे। गेट क्रिएटिव। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि उसने पेंटिंग किया, तो हम पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, गेम, बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जिसमें अपने माइंड को हम उसमें बिजी करके रखेंगे, जिससे हम अपने एंगर को भूलकर फिर हम अपने पूरे माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। टॉक अबाउट हाउ यू फील। और अगर आप अपने एंगर को काम डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, या जिससे भी आपको लगता है कि आप शेयर कर पा रहे हैं अपनी बातों को, तो उससे आप शेयर करिए उस सिचुएशन को, इस स्थिति को, तो वहां भी आप काम डाउन होंगे और आपका जो एंगर है वो रिड्यूस होगा। रिलैक्स योर मसल्स। आप अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो आप वहां पर हल्का महसूस करते हैं और कुछ भी जैसे रिलैक्स आपको, तो वहां पर आप शांति, आपका रिलैक्स हो जाएगा, आपका माइंड बॉडी दोनों रिलैक्स फील होगा। वो थोड़ा टाइम आउट, थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाएंगे, स्पेशली इन नेचर। जाकर वहां बैठिए, अकेले में समय बिताइए, उस स्थिति के बारे में सोचिए, और तो आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा और आप जो एंगर जो है वो जरूर रिमूव कर सकते हैं। डोंट टेक वर्ड्स पर्सनली। कोई भी बात आपको पर्सनली नहीं लेना है। मान लीजिए कि कोई बात सबके सामने बोला जा रहा है किसी के ऊपर, तो वो ये नहीं सोच रहा है कि वो बात मुझे ही सुनाई जा रही है, मेरे लिए ही बोला जा रहा है। इसमें क्या होता है, वो एंगर आपका बढ़ता है, आप एंग्री हो जाते हैं। तो वहां पर ये नहीं सोच रहा है कि क्योंकि वो कॉमन सबको बोला जा रहा है, तो वहां पर उस बात को, उस वर्ड्स को आपको पर्सनली नहीं लेना है। और जो एकेडमिक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट होते हैं उनको भी सपोर्ट करके, जैसे कोई स्टूडेंट लो मार्क्स लेके आया, उसका पूरा एकेडमिक परफॉर्मेंस है, तभी भी आप गुस्सा लाते हैं कि मैंने इतना पढ़ाया और तुम नहीं क्या कहते, उसको आपको गुस्सा नहीं होना है, बल्कि आपको उसको सपोर्ट करना है। तो वहां पर भी वहां आपका एंगर उसके प्रति कम होगा। तो देयर आर सो मेनी वेज टू कंट्रोल आवर एंगर। Now, so anger management session therefore become crucial in helping the child get comfortable in the new norms. Most of the children have two types of tendency.
सिचुएशन, तो उनको पता नहीं रहता कि उस स्थिति से किस तरह से निकलेगा। तो वो या तो they become angry, otherwise they become quiet, या तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं। तो उस स्थिति में you have to understand his or her problem, and because we are teacher, we are the parent, and we must look after this child and gently address them without causing stress to the child. हमें उसके रीजन को पहचानना है कि बच्चा क्यों गुस्सा हो रहा है, उस पर बिना स्ट्रेस दिए हुए उस प्रॉब्लम को एज ए टीचर एज अ पेरेंट हमें उसको सॉल्व करना है। मेन एंगर मैनेजमेंट इसीलिए कि वो हेल्प करे आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करके उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, चाहे आप पेरेंट है, चाहे टीचर है या फिर स्टूडेंट भी है, तो उसको भी ये टेक्निक सीखना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि हम कैसे अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं। नाउ वी विल नो कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन द एंगर फ्री स्कूल और एंगर फ्री जोन। At first, I want to ask from you, how can we make our school or as a anger-free zone as a teacher? Shamil sir. Very well. We teachers have many responsibilities in the school because this is the main workplace. This is the place where we do our performance. And this is the place where we do everything with the students, interact with the students, teachers, and sometimes with the parents also in parent-teachers meeting or in the office. So what we do, we never think of in a negative mood or any distracting things to be come into our mind so that it may not be exposed through us and may not be heard to the other people. So we always be positive while we are doing teaching, enter the class with a very happy, positive mood, so that our students will be happy to see that sir has come, ma'am has come, and he or she will tell something new today. So we always be very positive. Whatever duty or work we are provided or given or allotted to us, we do it justice to it, with a calm and cool environment. Create something new, innovate something new. These are not new words, but we have to do in such a way that all the things are going very smoothly throughout the day, and at last when you go home that we have done something good. Today we are relaxed, nobody is irritating me, nobody is doing here and there, this and that. So, if we do this regularly, when we are in a regular practice of this creating positivity, creativity in us, we feel relaxed. We do have a target, we have a time bound to do everything. So, we have to manage all these things in us. So, we teacher have that power to control and manage the anger and keep the school as the anger-free zone. Thank you. Thank you, sir. Very well described. टीचर जिसको हम लोग हिंदी में शिक्षक कहते हैं, जो 3 अक्षर से मिलकर बना है। शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, कमजोरी को दूर करने वाला। तो सच्चा शिक्षक वही है जो स्टूडेंट्स के, विद्यार्थी के कमजोरी को दूर करके और उसको क्षमा की भावना रखता हो और उसको शिखर तक ले जाए, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। But according to the study, it was found that teachers are at the risk of becoming angry. There are number of people
people who might have been drawn to the profession of teaching in the first place because they are kind and caring. But in India, the profession of teaching is adopted not by a choice but by a chance. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि टीचर जो है वो फर्स्ट डे से टीचिंग चुनते हैं क्योंकि वो काइंड और केयरिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए टीचर्स की। लेकिन इंडिया में ज्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ कोई उनको समझ में नहीं है, मतलब कोई उनको अपॉर्चुनिटी और नहीं मिली तो लास्ट में वो टीचर का प्रोफेशन को वो चूज करते हैं। तो टीचर की जो क्वालिटी है पोलाइटनेस, काइंडनेस, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट तो बहुत जरूरी है लेकिन साथ में काइंडनेस, केयरिंग ये भी बहुत जरूरी है। तो डू यू रियली बिलीव दैट द टीचर्स आर रियली बिकमिंग एंग्री विद देयर स्टूडेंट्स? तो इट कैन इफ दे बिकम एंग्री तो देयर आर सो मेनी रीजंस। टीचर्स गुस्सा होते हैं और उसके भी बहुत सारे कारण हैं। पर लैक ऑफ कंट्रोल इन द क्लास में गए, क्लास में कंट्रोल नहीं है, गए बच्चा शोर कर रहे हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बहुत गुस्सा आता है। डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, स्टूडेंट जो है कुछ जो है पीछे बोलते हैं या वो कहीं कुछ बोल दिए तो वहाँ पर वो ह्यूमिलेशन और इंसल्टेड फील करते हैं और वहाँ उसमें भी बहुत गुस्सा आता है। Instruction not being followed by the students, जैसा सर ने कहा सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, कहीं भी अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जाए जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये आपके भलाई के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपके बेहतरी के लिए दिया जाता है। अनहेल्दी रिलेशंस विद कलीग्स, आपके कलीग से अच्छा संबंध नहीं है, आप उनसे अपना संबंध बनाकर नहीं रखे हैं तो इसमें भी क्या होता है कि अगर कलीग भी कुछ बोल दिए, आपको उल्टा पलट के जवाब दे दिए तो उसमें भी गुस्सा आता है। लेजीनेस ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है ऐप में कि होमवर्क करके नहीं लाया है तो वो एक एक्सक्यूज भी था, लेजीनेस भी हो सकता है। तो अगर हम समय पर एक होमवर्क दिए कि वो आपको आज या कल करके लाना है, स्क्रिप्ट या असाइनमेंट करके लाना है, अगर आप नहीं करके लाते तो स्वाभाविक है टीचर गुस्सा होंगे ही, टायर्ड है और इतना ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं टीचर कि उसके चलते भी टीचर का गुस्सा आता है। इतना ज्यादा हर तरह का क्लास है, मैनेज करना है, पढ़ाना है तो बहुत उसमें भी उनको जब टायर्ड हो जाते हैं और ऊपर से अगर आप टीचर में बैठे हैं और आपको अगर लगा दिया जाए तो उसमें भी बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारे एंगर के कारण होते हैं बट इफ देयर आर सो मेनी कॉजेस देन देयर आर सम वेज टू कंट्रोल आवर एंगर। So there are some ways which we know. There are 3 steps to overcome anger as a teacher: response, react, and control. So at first, the first step we have to respond positively with the students. We should not react before understand the cause of our anger. If the students' behavior is the cause of our anger, then we should try to understand the root cause of the problem. After understanding students' problem, we may come out of the madness of being angry. तो हमें अगर लग रहा है कि हाँ गलती स्टूडेंट की है तो वहाँ पर हमें गुस्सा नहीं होकर उस गुस्से के मेन रूट को, मेन जड़ को समझना है और तब हमें वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। ये नहीं कि दो बच्चा आपस में झगड़ा कर रहा और हम भी जाके बीच में उसके साथ गुस्सा होने लगे, उसको समझाने के बदले तो ये फिर वहाँ पर मैटर को पूरा वर्स कर देगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट रिएक्शन, so the next step is to the positive reaction and to control the anger so that you can use it in a positive way. I think every problem has more than one solution. मतलब कहीं भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं किसी एक प्रॉब्लम को, तो आप सॉल्यूशन को सोचिए और वो भी पॉजिटिवली। नेक्स्ट कन्वर्ट, कन्वर्ट मींस
आपको टीचर होके ऐसे बात नहीं करना है जो बच्चों की छवि खराब हो जाए। तो अभी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है आपको। तो ना क्या हमने देखा कि टीचर्स के गुस्सा का क्या कारण है और उसको हम लोग शांत कैसे कर सकते हैं। Now I will talk the teacher of 1 to 5, class 1 to 5 standard। तो बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, जब आते हैं तो वहाँ अगर क्लास में टीचर गुस्सा होते हैं तो दे फील इंसल्टेड, अगले दिन वहाँ आना नहीं चाहते हैं, तो आपके साथ रोने लगते हैं और स्वाभाविक है इतने सारे प्रॉब्लम को देखकर टीचर गुस्सा होंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि when children come to school they want joyful learning and if the teacher gets angry then the students feel insulted। So CBSE has started many programs which is related with sports integrated, art integrated, and when we through this program, if we will be able to engage the children, so they will not fight with each other. The atmosphere will be joyful, and children will learn better with their creativity if they will be engaged in visual or creative or performing art or some sports। So if you give positive emotion, then you will there will be atmosphere of happiness and positive। यहाँ तो उनको मैनेज करना, छोटे बच्चों को कंट्रोल करना बहुत दिक्कत है और वो बच्चे या तो क्लास में आने से पहले रोने लगते हैं या फिर वो आना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर हमको जो बहुत सारे क्रिएटिव वर्क में उनको इंगेज करके रखना ताकि क्लास में वो आपस में झगड़े नहीं और जो क्लास का माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो, वो भी जॉयफुल हो ताकि उसमें उनमें स्किल डेवलपमेंट भी हो, क्रिएटिविटी भी बढ़े। Now we will talk about the students who are teenagers, which means class 6 to 10th standard। This is a very crucial age, and the teachers deals with the student very patiently। If we get angry in the situation, then if the students fight with each other, या if the students अगर आपको वापस में जवाब दे रहा है तो स्वाभाविक है आप गुस्सा होते हैं। उस समय में आपको क्या करना है, एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक को अपनाइए। कुछ देर आप शांत बैठ जाइए, नहीं होता है तो 3 ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, उसमें भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाइए क्लास से। अगर कोई आपके कॉलीग्स है तो उनके साथ वो थोड़े से आप अपने व्यूज को जो है वो शेयर कर लीजिए। तो इस तरह से आप काम डाउन हो जाए। लेकिन बात तो ये होती है कि टीचर्स जो है वो टीचर्स के पास एक प्रेशर होता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ आइए तो आपको स्माइल के साथ ही जाना है, भले टीचर कितनी ओवरलोडेड क्यों ना हो। उनको क्लास में ट्रेन करना है, होमवर्क देखना है, पढ़ाना है, क्लास मैनेज करना है, सारा चीज करना है। तो क्या जब 2 बच्चों को झगड़ते देखेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन हम टीचर्स हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमें वहां पर गुस्सा नहीं होके उस मैटर को सुलझाना है। क्योंकि जो 6 to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनके साथ हमें बहुत पेशेंसली और कामली डील करना पड़ता है। और ये भी है कि we teachers are the builder of the children's future। So the role of the teacher is a very big in making the students in a good person। So you can see here what is the role of teacher to make the school anger-free zone। Now we will talk about the role of students। So the role of the students is very big to make the school anger-free। First, self-awareness। Self-awareness is the first component of physical, mental and emotional intelligence। If it helps the student to become better decision maker and self-confident, the student should have self-aware। The student must identify the problem, put into words, not act before thinking। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमें पहले तो एज अ टीचर उनको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सिखाना होगा। स्टूडेंट्स का भी बिग रोल है, यानी कि स्टूडेंट्स गुस्सा करते हैं और
student. The student must think all the possible solution. अगर झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पर उसको छोड़ के पहले उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें। और वहाँ पर अगर क्रिटिकल थिंकर होंगे तो वो टाइम के वैल्यू को समझ पाएंगे। अगर क्लास में आपको कुछ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो दे शुड आस्क क्वेश्चन, and if they get answer, then they should gather information, apply them, and study with the help of examples, participate in the discussion in creative work. There are so many things that they can remove themselves from anger. So here I am not talking about the kids of 2 to 3 years who are in the learning stage. I am talking the children who are 13 to 14 years. They too have to understand that how we should cooperate with the teachers. They should act. They should not react in any situation. And ऐसे क्या होता है कि बच्चे जब नहीं समझ पाते पहले ही रिएक्ट कर देते हैं सोचने से पहले, तो बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्कूल मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, टीचर उनको समझा रहे हैं, उस पर भी वो समझ नहीं आ रहा, वो उस काम को जारी रखते हैं, तो उसके बाद इसमें क्या स्कूल मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स को यहाँ ह्यूमिलिएशन, इंसल्टिंग, इसका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सबको मिलकर ये इस चीज को एंगर फ्री जोन जो है हमारे स्कूल को बनाना है। Now we will know the role of parents. Parenting can be an emotional roller coaster. Parents may experience anger around many reasons. Anger is a normal emotion, as you know. बच्चों को बड़ा करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है, लेकिन कभी-कभी हम पेरेंट्स जो है बच्चों के गुस्सा होने पर गुस्सा हो जाते हैं, बच्चों के फ्रस्ट्रेट होने पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बच्चा आपको रूडली बोल दिया तो आप गुस्सा हो गए। कभी आपका जो है ओवरलोडेड होते हैं, टायर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। In this situation, feeling angry is absolutely normal. But however, if you use a calm control approach to manage your anger, you can turn common anger triggers into teaching moment. अगर आप घर में गुस्सा हो रहे हैं और लेकिन आप गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करके आप काम डाउन हो जा रहे हैं, तो बच्चा भी वो सीखेगा आपसे कि देखो मेरे मम्मी पापा को गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस समय वो मुझ पर गुस्सा नहीं दिखाया बल्कि शांत हो गए। तो वो जो ये चीज जो है वो भी सीखेगा कि वो जब गुस्सा होगा तो उसे कैसे काम डाउन होना है अपने पेरेंट्स की तरह। तो there are some steps to calm down with the kids. Stop everything. जिस समय आप गुस्सा हो रहे हैं सब काम को छोड़ दीजिए, एक रूम में जाकर आराम से बैठ जाइए ताकि आप बच्चों पर अपना गुस्सा न निकाल पाए। काम डाउन प्लान, आप उस समय एकदम शांत हो जाइए, चुपचाप से बैठ जाइए या तो बिल्कुल वहां पर अपने बच्चों को पहले ही बोल दीजिए कि थोड़े देर मुझे अकेला छोड़ दे। कंसीडर द सिचुएशन, आपको उस स्थिति के बारे में सोचना है कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, आप अपने गुस्सा जो अपने बच्चों पर क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण है, फिक्स द प्रॉब्लम। और वहां पर आपको क्या करना है, आप कुछ में इंगेज हो जाइए, या तो क्लीनिंग सफाई करिए या रीडिंग करिए या कुछ और काम करिए ताकि बच्चों को उसका सामना ना करना पड़े। कीप पेशेंस, और जब गुस्सा आता है तो उस समय आप पेशेंस से काम लीजिए। तो यू कैन एज अ पेरेंट यू कैन कंट्रोल योर एंगर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर। Now we will know how will the parents deal with the different age level children. For parents of kids to 3 to 5 years, जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके साथ पेरेंट्स कैसे डील करें। तो इस एज में बच्चे क्या होते हैं, they are found to be mess, वो बर्बादी फैलाते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, तो हमें
बच्चे जो है हमारे फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको अगर हम गुस्सा तो पहले ही बोल दें कि हम हमें कुछ देर के लिए अलग छोड़ दें, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ सकते हैं। एंड फॉर द पेरेंट्स ऑफ 10 to 18 years, इस समय जो है आप उनके सेफ्टी, उनके हेल्थ, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो हो सकता है जो टीनेजर है वो आपको पलट कर जवाब देते, तो उस समय आप शांत नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको भी समझना है कि वो जितना भी बड़ा हो गया होगा लेकिन आपका बच्चा ही है, इसलिए उसको आप जैसे छोटे में ट्रीट करते थे आपको उसी तरह से ट्रीट करना है, उसी तरह से समझाना है। नाउ यू विल नो द रोल ऑफ पेरेंट्स और चाइल्ड एजुकेशन प्लेइंग अ गॉड मोडल। तो फैमिली इज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ पेरेंट्स to ensure that the happy learning environment is provided to a growing child. Children often choose their role model based on the kind of behavior of their parents. वो अक्सर सोचता है कि जैसे मम्मी पापा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह बनूंगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि एक बच्चा वो टेम्पल जाता है और वहाँ बोलता है कि ये ईश्वर मुझे अगले जन्म में मोबाइल बनाना। तो उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो बोला कि मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा समय मोबाइल में देते हैं, तो इसीलिए हमें बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, उनके लिए समय निकालना है, ताकि बच्चे भी जो है उनके मतलब इम्पोर्टेंट, उनके एजुकेशन को, हमें लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमेशा उनका साथ देना चाहिए। Be involved in the child activities. Parents should participate in their children activities to give the feeling that they are being supported. उनको बच्चों के एक्टिविटीज में सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो गेम खेलिए साथ में, चाहे पजल सॉल्व करिए, उनको होमवर्क में मदद करिए, उनको टेस्ट में मदद करिए। नहीं तो बहुत बार पेरेंट्स जो है वो समय नहीं दे पाते हैं और उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, खेल में भी अच्छा हो, पेंटिंग में भी अच्छा हो, डांस में भी अच्छा हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कोई समय नहीं देते हैं। Constructive criticism. Again, if the child is not fulfill your expectation, then you criticize. You start criticizing. तो हम अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों से कि देखो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम कैसे किए हो। मान लीजिए एग्जाम्पल है कि मैं आपको जो है 2 साल के बच्चे को पार्क में लेकर गई, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, मैंने किसी पेरेंट्स से उसके बच्चे की उम्र पूछी, तो वो बोला कि 10 महीने का है। तो वो बोले कि देखो तुम्हारा आपका बच्चा 10 महीने में चल रहा है, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, अभी तक तो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। और बच्चे जब स्कूल में पहला स्टेप रखते हैं तभी से माँ और पेरेंट्स जो है वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये कंपेयर अगर जो है टीचर्स स्टूडेंट्स का नहीं होता, बल्कि पेरेंट्स का कंपेयर कंपटीशन होता है, उनका कंपेयर होता है। वो बोलते हैं कि देखो अभी 2 साल में आपका बच्चा कितना अच्छा लिख रहा है, मेरा बच्चा तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखा। तो ये जो है क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, ये बिल्कुल भी गलत है। तो द रोल ऑफ पेरेंट्स इन दिस सिचुएशन टू सिट डाउन विद देम एंड वर्क द प्रॉब्लम आउट टुगेदर इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग टू देम। नाउ फ्रीडम टू चूज। अब उन्हें अपना जो फेथ है, अब उनको जिससे इंटरेस्ट है उसको चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। From the moment that the child is born, parents start working and worrying about his or her career. Many times we see that parents determining the child profession at the age of 2. 2 साल की उम्र में ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा तो ये बनेगा। उसमें क्या होता है कि जो उनका एजुकेशन उसमें इफेक्ट करता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या है उनको स्पेशली उसके सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट के प्रति वो बायस्ड होते जा रहे हैं, तो इससे बच्चों के एजुकेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एंड सेलिब्रेट योर चाइल्ड सक्सेस। आपको अपने बच्चों के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा अच्छा करता है तो सोशल मीडिया में डालकर सारा अचीवमेंट हम खुद लूट लेते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क किसने किया, बच्चे ने किया। तो हमको उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, उसको रिवार्ड देना है, तभी जो है वो आगे जाकर वो एंगर फ्री जोन जो है हम लोग क्रिएट कर
पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, कैसे सब मिलकर एंगर फ्री जोन बना सकते हो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब पीटीएम होता है तो वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि टीचर्स कितना हार्डवर्क करते हैं, लेकिन वापस अपनी प्रॉब्लम को लेके आते हैं। लेकिन कभी पेरेंट्स को सोल्यूशन लेकर भी आना चाहिए। तब स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब मिलकर हम लोग एंगर फ्री जोन बना सकते हैं स्कूल को। एट लास्ट I want to tell the mantra of overcome anger. Right. Go inside yourself. When you feel angry, when you become angry, so consider yourself as a turtle. A turtle has a set. When he comes to the problem, he hides himself in the set. So such like a turtle, when in the same way, there is the same inside you. That is the power to think. Whenever you get angry, drink water, think before you act, and take a time out. Second, take deep breath. After that, time to relax. Calm yourself down. Take a deep breath, and you will feel relaxed in both your mind and body. Walk away for some time. So when you feel angry, you will go for a walk. You can go for a walk, and you can find the solution of the problem. Now there is a worksheet for you, and after that you will fill the feedback form. There are two worksheets. You have 10 minutes time for this. In the worksheet 5, you have to teach what you feel. And in the worksheet 6, there are some words. You have to put them. It is related with anger, calm, or both. What we have to do in worksheet 5? In worksheet 5, there is a situation. So how can you manage this? You have to think.
क्या होता है बैक प्रोटेक्टर बहुत मीन्स कौन सा वर्ड है जो आपको लग रहा है एंगल में भी वो चीज हो सकता है काम जब आप कहते हैं तब भी हो सकता Hand out close your okay.
एक ही साथ ले लें एक ही साथ ले लें फीडबैक अलग लेना फीडबैक आप फीडबैक छोड़ के करना खत्म हो गया था सही है क्या तो जुड़ा हुआ है
I request you to all please maintain silence. At last, I would like to thank Survi ma'am and Niklesh sir for giving me this opportunity and believing on me. And I also want to thank all my colleagues for supporting me. And I want to give special thanks to Alvar sir because without him it was not possible to complete my session successfully. Thank you. So, to conclude for this in-house session of Jack and Jill Singhani, on behalf of COE Patna, I greatly thankful to our director man, Survi ma'am, our secretary sir, Niklesh sir, the resource person, ANURADHA, our entire teacher and team members, and our IT expert and technician, Alvar sir, and in the background, there is so many people sir also there, Shahid sir,
they all have cooperated to make this in-house session successful one. So I give a very huge thanks for them to complete this session successfully. And at last, you have all filled the feedback form. So this is a very good session to end. Thank you all. Now, to conclude this section, we request all of you to stand up and get ready for the national anthem. 1, 2, 3, start. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय